Justice Manzoor Malik Sahab for assistance on the criminal aspect of the matter, since he is of course a master of all, but his particular area of expertise is the criminal law, so he wanted to be assisted by him. Ji, and I will, since we are running against the clock, I would request my colleagues to keep the questions to a minimum and preferably after he concludes. Bismillah kijiye ji. अगर इजाजत होती है प्लीज क्रिमिनल पे इन्होंने बात करी तो बाद में कर लेते प्लीज आप तशरीफ रखें ना, आपको सुनेंगे, हमने कह तो दिया है आपको. Thank you very much, sir. जी Sir, with your permission, I will make a request, sir. जी जी. Sir, the first issue before your lordship is the pure constitutional issue, that is the interpretation of Article 186 of the Constitution. Very exhaustive and elaborate submissions have been made by the learned amicus, and assistance rendered by them is serious, is valuable assistance they have rendered. But your lordship, as I believe, has not decided that issue so far. So my humble request would be the issue which I am dealing, though legal to some extent, but it is factual as well. So my submission would be, my request would be, kindly consider my submission as if you are hearing the appeal in 1978. Kindly consider in that context. The decision is yours. You may, after considering my submissions, our submissions, other submissions on the facts and the law, may come to the conclusion that there is nothing wrong with the trial. It was a fair trial. Everything happened in accordance with law. But if your lordship comes to a different conclusion, then it will be exclusively your lordship's domain to use that opinion. But I will not insist that it should be used in a particular way or particular fashion, but kindly when I'm making submissions, so those submission would be if I may just interject here. Yes, sir. In a criminal appeal, there are some minor points and there are some very major points. Yes, yes. What we will look to you... A major point. No, the kind of points which should shake someone's conscience. That sort of point. Not the someone's statement was not or something technical like that. No. So we will certainly consider it, and we didn't want to break it up into two sessions. We just wanted to hear everything, and if you're not persuaded by the first limb, naturally your effort may go to waste, but it will still be a good lesson otherwise for students of law. Sir, I will be precise. I will be so let's start. Point. Please. No, sir. First of all, I have prepared a summary of the case, and I believe copies have been provided to your lordships. CMA? Not CMA, sir. Okay, you're doing so now. So this is the summary of the case. Sir, this incident, your lordship have got the copies? Yes. Yes. Is it be there then? So this incident, as per prosecution, took place on the intervening. Your lordship need not to take the notes because I have mentioned everything. On intervening night of 10th and 11th of November 1974 at around 12:30 a.m. It was night time. And it took place in Lahore, Shadman Chowk. Those learned judges who are from Lahore know this place very well. It is in the almost heart of the town, hardly 2-3 kilometers from the governor house. So this is it was, even at that time in 1974, it was a populated area. And
Sir, this matter was reported to the police on the same night. In fact, a written application, which was signed by Mr. Ahmed Raza Kasuri, was submitted to Abdulaziz Sub-Inspector Police Station, Gulbagh, Lahore, at 3:20 a.m. And it was submitted in the FIR, it is mentioned it was submitted at the United Christian Hospital, which is commonly known as American Hospital. Deceased in this case was the real father of Mr. Ahmed Raza Kasuri, Nawab Muhammad Ahmad Khan. And sir, his post-mortem report reveals that he had 2 firearm injuries on the head. One is entry, other is exit, and 2 abrasion, very small abrasion, one on the right arch, other on the left forearm, but none was injured in this incident. The case was registered at police station Ichra on the same night at 3:45 a.m. FIR number I have mentioned, this is 402. It was registered under section 307 and 302 PPC. Sir, investigation started. May I ask how far is Ichra police station from the place of incident? Hardly 2-3 kilometers, hardly. It is the closest police station? Yes. Okay. It was within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered, though his statement was recorded by a sub-inspector of a different police station. It was recorded by a sub-inspector who was attached with police station Gulbagh, Lahore, but this place falls within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered there. It was 2-3 kilometers from the place of occurrence. So why 307 was inserted? So this was firing. They had the intention to kill a person, but even if he did not receive injury, 307 is detected. It is now 324. Now it is 324. At that time it was 307. 307. Yes. So this investigation started on the same night by the SHO Ichra, Abdul Hai Sub-Inspector, and investigation remained with the police station till 14th of December 1974. Thereafter, it was transferred to CIA Lahore by the order of then SSP Lahore, and I will make the detailed submission how it was transferred and where it is mentioned. And so the next important point, the most important point in this case, close of investigation. On 1st of October 1975, a report was prepared within the provision of rule number 25/57 of Police Rules 1934 on the form that is 25.57 within bracket 2 of the same rules by Abdul Hamid, Inspector CIA Lahore. This report was signed by the DSP Ichra Circle, then SP Kent, and then finally it was approved by the magistrate. Before we go forward, the FIR, what was who was accused in that FIR? FIR, nobody was accused. What was the written application of Ahmed Raza Well, Kasuri? I'm just giving you the brief summary. I will make the detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, Police report regarding closing of the case? Yes. Closing. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. traceable. And then there's Or do they use the word untraced or not traced? we could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read, because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules दीजिए. Police. आप if you don't mind जरा सा आप notes कर लें.
we will certainly hear Sir, you. I will make it clear, Bhutto was not named as accused. Okay, we will read There it. was just a mention that he uttered such and such word. Please, sir, I will not make any incorrect statement. ठीक है, ignore that. No, he was very respectable for me. नहीं, वो हाँ. We will read it, whatever the document says, it will say. Whatever I say, Is that FIR available on the record? Yes, I will refer. I will refer to the SIR. Now, please, I am just giving... एक second. On behalf of Mr. the learned amicus, we have appointed him to assist the court. He is not a party in this case. If the learned amicus has its human error, he may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points. When your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, जी आप पर चलें. no, sir, no problem. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will be repeating this. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation, and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed, in October 1975, the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IG. Then, sir, the next important phase is the re-investigation. As per record of which is now available before your lordship, I will refer it subsequently. This re-investigation was started by FIA, Deputy Director FIA, his name is Abdul Khalid, he appeared as PW 41 on 24/7/1997. And on the same date, Arshad Iqbal and Rana Khar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there, I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, so you are saying that after closure of the case, which was in 75, 76. no, 75 tha. No, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस भी आऊंगा. मैं जस्ट आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. ना बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977. But surprisingly, the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for reinvestigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding reinvestigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. You will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan
was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977, and in the interim challan there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan, and the matter went to the court of session. And that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC, and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... दे दिए? Okay, fine. सबको दे दिए. Please proceed, Ji. Sir, please. दे दिए. And now, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page... You are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? कंप्लेंट की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR वो इतनी क्लियर नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is sir at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी.
Volume 7. Volume 7. یہ سر بڑا ہی اس کو بڑے ہی میں I don't have the words to use کس طرح اس کو 310. لسن وہ پڑھ لینا پھر اس میں نہیں ہے ہے سر والیوم 7 وہ والیوم غلط لکھا ہوتا ہے نا جی یہ بڑا ریکارڈ جو ہے نا اس کو پراپرلی انہوں نے یہ بنایا اردو میں جو لکھی ہے. جی سر وہی ہے کاپی ہے ایف آئی آر کی اس میں نہیں کاپی نہیں ہے سر میں آئی ایم ریفرنگ ٹو دا ایپلیکیشن یہ اردو یہ والی. یہ والی بالکل یہی والی ہاں یہ پڑھ لیں ذرا. میں اس کی بیٹر کاپی دی ہے نا جی میں وہ پڑھوں گا. اچھا I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. جی we got it. Shas میں just. But we don't have the better copy. 301 یار دونوں. Have you given it now? Yes sir yes. وہ better copy دے دیں ہمیں. دوسری دے دو. یہ بھی پڑھی چلیں سر نہیں وہ بڑی ضروری ہے بیٹر کاپی آپ دیں نا. لیجیبل کاپی ہم پڑھ سکتے ہیں. quite clearly written آپ پڑھیں. بہت صاف لکھا ہے انہوں نے. بیٹر کاپی آ گئی بیٹر کاپی ہے سر. لیجیبل کدھر ہے وہ دی بھی ہے اب کسی اور کو دے دیں. سارا کام نہیں کر پا رہی ہیں تو کسی اور کو دے دیں. ایک آدمی ادھر آدھے ان کو دے دیں آدھے ان کو دے دیں. جی بتا دیں. اسی میں پڑھوں جناب پڑھوں. بس ایک اگر آپ برا نہ مانیں مجھے پسند ہے لفظ لیجیبل کاپی. بیٹر سے لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آ گئی ہوگی. اب وہ یہی ہم یوز یہ کرتے ہیں بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو جی بسم اللہ. ہم یہ ہمارا جو پریکٹس ہے اس میں ہم ہاں وہ آئی نو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے مگر ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں. ہاں پڑھیے مورخہ. جی ایک سیکنڈ سر وہ جسٹس شاہ از لوکنگ فار دا کاپی. جی پلیز آئی ایم گاٹ اٹ سر. جی وہی چیز ایف آئی آر میں بھی لکھی ہوئی ہے. جی بالکل وہی ہے. یہ جسٹ فار یور کنوینئنس سر. اٹ از فار یور کنوینئنس. جی پڑھ لیں. جی سر. مورخہ 17/1/1972 کو آج سے قبل قصور میں مجھ پر بذریعہ فائرنگ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے گولیاں بھی لگی جس کا مقدمہ تھانہ شہر قصور میں درج ہے. اس کے بعد مورخہ 24/8/1974 کو اسلام آباد مجھ پر خودکار آلہ سے حملہ ہوا جس کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام آباد میں درج ہے جن میں مفصل حالات درج ہے. پرسوں 9/11/1974 کو مجھے محمد حنیف الیکٹریشین ٹیوب ویل ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بتایا کہ ایک یوم قبل 4-5 آدمی میرے گھر کا پتہ دریافت کر رہے تھے اور میری تلاش کر رہے تھے. آج قریب 12:30 بجے رات میں ماں اپنے والد نواب زادہ ایم اے خان میری والدہ اور اپنی خالہ مسز آغا محمد مہدی اپنی کار نمبری LEG 9495 پر سید بصیر حسین شاہ کی کوٹھی واقع شادمان کالونی کی شادی سے فارغ ہو کر کوٹھی سے شاہ جمال کی جانب جا رہے تھے. میری کار دائیں ہاتھ ڈرائیو ہے جس کو میں خود چلا رہا تھا. میرے بائیں طرف میرا والد نواب زادہ ایم اے خان، میرے عقب میں پچھلی سیٹ پر میری والدہ اور ان کی بائیں جانب پچھلی سیٹ پر میری خالہ بیٹھی تھی. جب گول چکر کے قریب کار آئی تو اچانک دائیں طرف سے میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی جو تقریباً 100 گز تک میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. چند ایک گولیاں میرے والد کو سر پر لگی، ان کا کافی خون بہنے لگا اور کار دائیں طرف سے چلنی ہو گئی جس کے شیشے ٹوٹ گئے. میں اپنے والد کو کار میں سیدھا امریکن ہاسپٹل UCH گلبرگ لے آیا جہاں پر میرے والد فائرنگ کے زخموں کی تاب نہ لا کر جان بحق ہو گئے. یہ فائرنگ خود کار آلہ سے کی گئی جس میں میرے والد نواب زادہ ایم اے خان قتل ہو گئے ہیں. یہ فائرنگ مجھ پر سیاسی وجوہات کی بنا پر کرائی گئی ہے کیونکہ میں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا ممبر ہوں اور تحریک استقلال کا جو کہ ملک کی سیاست میں حکومتی پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور گورنمنٹ پر کڑی تنقید کرتا ہوں. یاد رہے کہ جون 1974 میں قومی اسمبلی میں مسٹر بھٹو نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں، یہ شخص میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے. یہ الفاظ قومی اسمبلی کے ریکارڈ اور اخبار بات میں موجود ہیں.
No, sir, this FIR, as your lordship have seen, it has three parts. Number one is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number two is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number three is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the three portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes. Is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was unknown person? So far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। Now I am referring to the second part of this FIR. And I will very fairly, I will say, this is the very good narration of the events, so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the event, which has been described, and this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. Either there is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the events, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ground पे आप bail देते थे, पता नहीं मैं क्या करता। नहीं, और दूसरा, please proceed जी। अब इसकी एक और aspect देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So it is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation.
But I don't want to much time spend on this aspect of the matter because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Qasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है. नहीं वो बात तो ये ना जी कि हमने तो ये देखना है जनाब ने बात है FIR में ऐसा लगता है. मैं आज करने लगा हूँ. नहीं आप बात सुन लीजिए. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था. इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी. नहीं राइट हैंड लिखा है. राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा. वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता. और दिस वाज 74. कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. वो ऐसा इशू नहीं है. मैं क्योंकि माय लॉर्ड हैज सेड कि जी टाइम का मसला है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो वक्त है ना जी इसको हम बाद में डील कर लेंगे. फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया. अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ. ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी. और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है. निकालो पेज 39. ये चालान है? नहीं सर, ये वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ. पहले मैंने कहा ना जी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती रही, फिर उसके बाद ये CIA को ट्रांसफर हो गई. मिल गया जनाब को पेज? पढ़ूं मैं? नहीं जरूरत है. आपको पता नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है. नहीं मेरा मतलब आपने कह दिया तो ठीक है. इसमें सिर्फ ये है, मैं खास बात है तो बता दें. मैं सिर्फ ये अर्ज करने लगा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर फलां के तहत ये CIA को ट्रांसफर होगी. अगर जनाब ने पढ़ लिया तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ता. ठीक है. बेसिकली आप चालान पढ़ना चाहते हैं? अगर चालान, वो चालान से पहले मेरी गुजारिश ये है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जनाब को बताने लगा हूं कि ये क्लोज कैसे हुई, किसके ऑर्डर से हुई और किस तरह री इन्वेस्टिगेशन हुई. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड योर लॉर्डशिप हैज फ्रेज्ड द क्वेश्चन कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई नीड योर काइंड इंटेलिजेंस ऑन दिस पॉइंट. जी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो सर, योर लॉर्डशिप काइंडली सी this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.57, 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. जी मिल गया सर? मिल गया. ये पढ़ूं सर? 105. ये तो मुझे FIR नजर आ रही है. नहीं सर, नहीं FIR नहीं है. फॉर्म रिपोर्ट खात्मा ज़ेर दफा 173. वो 173 में ये रिपोर्ट वही बनती है. बेसिकली रूल इसका डिफरेंट है मगर उसकी बॉडी में वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ. ठीक. अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ इसको. अगर आप समझते हैं पढ़ना चाहिए. बड़ा जरूरी है. पढ़िए. इसमें नहीं मिलेगा सर, ये पुलिस रूल्स डिफरेंट है. दोनों हम देख रहे हैं. आप मैं दोनों बातें. 173 है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की. वो क्लोजर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है. आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं समझा आप देख नहीं सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. जी आइए सर, इसको पढ़ लेते हैं. ये मैं रेलेवेंट पढ़ूंगा सर. जी. पहला तो ये है ना, ये जो पहला पैरा है ये मैं नहीं पढ़ता क्योंकि ये सारा FIR है. अब मैं सेकंड पढ़ना चाहूंगा. हर पहलू पर तफ्तीश होती रही. आज तक की तफ्तीश से मुकदमा हाजा में कोई सुराख मुल्ज़मान ना मिला है. मुकदमा हाजा में अब तक कोई मुल्ज़म गिरफ्तार ना हुआ है. मुकदमा हाजा काफी दरीना हो चुका है. दरीना मतलब सर पुराना. आई बिलीव इट्स पर्शियन वर्ड्स. दरीना हो चुका है जिसमें सुराख
बरारी का कोई फिलहाल इम्कान ना है। मुकदमा को मजीद ज़ेरे तफ्तीश रखना महज बेसूद और तोसीउल वक्ती है, लिहाजा मुकदमा हाजा में रिपोर्ट कायमा बसीगा अदम पता, ये है जनाब वो जो बसीगा अदम पता, नो क्लू नो ट्रेस, मरतब करके बमराज समात अरसाल है। बाद मलाजा मिसल मुकदमा हाजा को अदम पता दाखिल दफ्तर फरमाए जाने का हुक्म तहरीर किया जाए। ये तफसील लिखी है सर। और उसके बाद ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये इसके दक्सद हैं DSP दफ्तर, और उसके नीचे एसपी के हैं 24/4/76 को। और फिर बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है। ये 9/5 नहीं सर नहीं, 3 ये किसका है? 9/5 किसका है? ये इंदराज शुदा है जी, ये तो अच्छा, इंदराज शुदा, एंडोर्समेंट है। हाँ 3/5 3/5 और उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं हस्बे इस्तदा पुलिस मुकदमा बसीगा अदम पता दाखिल दफ्तर हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इन्वेस्टिगेशन वाज क्लोज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। द पुलिस जस्ट रिकमेंडेड। ये जो हर पहलू का लफ्ज देखा गया इस तरफ, राइट, हर पहलू से मुराद वो जो कॉन्स्पिरेसी वगैरह तमाम शामिल। हर पहलू, they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. ये ऑर्डर आज तक इंटैक्ट पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल इंटैक्ट है। इंटैक्ट पड़ा हुआ है। और आप ये कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायसनेस जाहिर करती है विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। भी अगली चीज पे वो चली जाती है। अब बायस का तो उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं पता, मगर अगर आप मुझे उर्दू में पूछेंगे तो ये बददियानती जाहिर करती है। बायस तो बड़ा सिविलाइज सा वर्ड है ना जी। बदनीयती, बदनीति नहीं, बायस और चीज है। अब आई डोंट नो द अप्रोप्रिएट वर्ड इन उर्दू। तासुब, यस, वो तासुब है, बायस तासुब है। दिस इज नॉट बायस, दिस इज बदयान। ये एस्पेक्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया या नहीं? नो, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इतनी लंबी जजमेंट हमें नहीं पता सर। वही तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ दी इस पॉइंट पे कि उन्होंने कहा कि ये क्लोज किया गया और उसके बाद ये FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दैट्स ऑल। वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का तस्करा नहीं किया। नो। लेकिन आपके ख्याल में जब ये चालान आया तो वो तो मैजिस्ट्रेट ने उसको इंडोर्स किया, तो डोंट यू थिंक इट वाज एन इम्प्लाइड? नो सर, चालान तो एक सब्सिक्वेंट स्टेज है ना, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। नहीं, इंडोर्स नहीं किया उसने। आपसे ये इसकी बात कर रहे हैं, सपोर्ट की। आप देखें ना, ये आप पेज 4 पे आ जाए ना। नहीं, 4 उसको छोड़े सर। हाँ, आप एक चीज है, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने एक चीज को क्लोज किया है तो उस ऑर्डर को उनने it had to be set aside या it had to be recalled. Yes. That wasn't done. सही। ये कहा जा सकता है जिससे हम आपकी इसमें हम वो मांग रहे हैं असिस्टेंस के, ठीक है, there was no recall of that order, but what about जब चालान दोबारा से आया और वो आगे जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट सेशंस को भेजेगा, तो उसने वो चीज देखा, will that not compliance तो नहीं हुई फिर? No sir, no. Magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the court of session. He cannot pass any order except
that this file be sent to the Court of Session. Yes. This is for the Session Court. And from Session Court, this case went to the High Court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further, how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. मलिक साहब इसमें FIR दाखिले दफ्तर कंसाइन टू रिकॉर्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुई है FIR। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ई में गई ना सी में गई। नहीं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और दूसरा एक चीज ये फिर फरमाइएगा कि इसमें फिर री इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर हुआ तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि री इन्वेस्टिगेशन पे तो अभी हम आ रहे हैं। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लूँ मैं कि ये ऑर्डर किया किसने क्लोजर का, मैजिस्ट्रेट। अब इसको रीओपन करने के लिए इट इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस कि यू विल गो टू द मैजिस्ट्रेट साहब, वी हैव दिस फ्रेश एविडेंस एंड काइंडली ग्रांट। We got the point. Next point. साहब उनको भी तो जवाब देना है अगर इजाजत दे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि FIR कैंसिल तो नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई। री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होना हो सकता है। री इन्वेस्टिगेशन वाज परमिसिबल, but of course under the provision of law you have to follow a procedure for With the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine them. नहीं, ये सब का मकसद ये था कि जो subsequently ultimately चालान जब आया, उसी की बात कर, अगर उस वक्त जब चालान आया तो जब वो ऑटोमेटिकली सेशन कोर्ट में चला गया, it doesn't amount to endorse the second investigation. Not at all. Not at all. उसमें तो ये चालान जब आया मैजिस्ट्रेट ये तो कुछ वो करेगा ना, जब आप सर ये तो सिचुएशन आएगी ना कि अगर आप मुल्ज़िम को बुलाते हैं तो वो ये पॉइंट रेज करेगा ना, मैजिस्ट्रेट को कहाँ से पता चलेगा? उन लोगों ने देखा ही नहीं इसको। नहीं, उन्होंने तो देखा नहीं, मुल्ज़मान तो थी नहीं मैजिस्ट्रेट के पास। एंड इवन दे डिड नॉट गो टू द सेशंस कोर्ट। ये तो अब अगली स्टेज आएगी, पहले मैं खैर इसको जरा डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम क्लियर नाउ सर? जी जी, थैंक यू। Then sir, how this reinvestigation started? वो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दी, PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53 पैरा 9 पेज 61 पे ऑब्जर्वेशन है कि how this was closed and how the reinvestigation started. Your lordship may read it. अब टाइम का प्रॉब्लम है जनाब, मैं अब अगर कहते हैं तो पढ़ देता हूँ। तो उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट का जिक्र ही नहीं किया। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये क्लोज की है DSP ने आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर पुलिस हायरार्की, IG, DIG, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and reinvestigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I'm moving towards that. नहीं, ठीक है, वही है। जी। अब सर वो इशू भी है ट्रिब्यूनल वाला, बट दैट आई विल डील सब्सिक्वेंटली। वो जो ट्रिब्यूनल में जनाब ने कहा शफी रहमान साहब का ट्रिब्यूनल है, उसमें भी मैंने नोट किया हुआ है, जिसमें कसूरी साहब ने कहा कि ये मेरा नाम लिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो भुट्टो साहब खुद हैं, हो सकता है कोई उनकी बात सुन के कोई दूसरे ने कर दिया, ये उनका बयान है ट्रिब्यूनल। अब ना कमिंग वो, बट मैं अभी अगर करूंगा तो ये सीक्वेंस आप चलें जैसे आप करें, वो मैंने वैसे क्लियर कर दिया आपको कि वो वहाँ जो ट्रिब्यूनल में बात क्या है। नाउ सर वी आर कमिंग टू री इन्वेस्टिगेशन। Now, if your lordship kindly look, file number 21, Zimni number 96. 21, ये भी है? 21 भी है सर, 3 है बहुत बड़ी बड़ी, और इसका एक तो ओरिजिनल थी, फिर उसकी ये कॉपी, फिर मैं इसको कहूँगा वॉल्यूम 21 निकालें। ये है फाइल 21। थैंक यू। उसका भी अब वो पहले उसका इसके 21 पेज, इसका पेज है सर 1। जिमनी नंबर क्या बताया मैंने? जिमनी नंबर सर 96, टॉप पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ जिला लाहौर लिखा है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट जिमनी 96। वॉल्यूम 21 का है भाई।
بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے کہ اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے بہت ٹائم لگا نمبر تو یہ کیوں پڑے میں 22 ہے یہ اردو میں ہے دوسرا مائک قریب بتاؤ صرف سیکنڈ کرو مائک دوسرا بتاؤ کون سی فائل کون ہے سا پیج ہے من صاحب سر پیج 1 یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب یہ فائل نمبر 21 یہ اس کا پہلا پیج یہ 4-5 پیج ہیں جو انڈیکس ہے اس کے آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ بہتر کاپی کس چیز کی ہے؟ ضمنی کی جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں مائی لارڈ نوز اٹ ویل یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی ہیں بٹ میں نے ویریفائی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا نہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے فائل 21 کا پیج کیا سر 1 آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر وہ انڈیکس ہے یہ انڈیکس کے 3 پیجز ہیں یہ چھوڑ دیں اس میں ساری وہ ڈیٹیل ہے اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں سر میں پڑھنا چاہوں گا پڑھیے یہ دوبارہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے جی ہاں ویری رائٹ یہ ایز مائی لارڈ جسٹس مدر واز آسکنگ سر دس دے آر ناٹ ٹاکنگ اینڈ میڈم دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ آئی ول ناؤ کم ٹو دا اور ویدر دیر واز آرڈر اور ناٹ دیٹ از جسٹ سم تھنگ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو پاس آرڈر فار ری انویسٹیگیشن سر پہلے ایک تو گل کر چلیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آئی آلویز لو دا کوشچنس and I am ready to answer every question but the problem is as of my lord has said نہیں آپ چلیں آپ اپنے طریقے سے چلیں نہیں میں آپ کے طریقے سے چلوں گا نہیں ہم بعد میں سوال پوچھیں گے چلیں آپ چلیے جناب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 24/7/1977 اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مرتبہ عبد الخالق DD مرتبہ کا مطلب ہے کہ who prepared it again it is a Persian word مرتبہ اب یہ لکھتے ہیں جناب علی رپورٹ ضمنی نمبر 95 یہ پچھلی کا حوالہ دے رہے ہیں مورخہ 1/10/75 تحریر ہے حسب احکام مرکزی حکومت FSF کی کارروائیوں کے بارے میں انکوائری شروع ہے یہ انکوائری ہائے مورخہ 13/7/1977 سے جاری ہے FSF کا ریکارڈ ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اشخاص و ملازمین FIA سے خفیہ دریافت جاری ہے اس دوران میں FSF کے خلاف عوام کی شکایت بھی زیر دریافت ہے نواب محمد احمد خان کا قتل بھی خفیہ طور پر زیر دریافت تھا اور لاہور ریلوے اسٹیشن لاہور پر مارچ 1975 میں جو بم کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے جس کی ایک سٹیج پر ٹریبیونل نے یہ ریمارک دیا تھا کہ تفتیش اچھے پیرائی میں نہ ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن والے کیس کی دریافت کے سلسلے میں یہ مخبری ہوئی کہ اغلب گمان ہے غالب یس غالب کیا اس کو انگلش میں کیا کہیں گے سمجھ گیا سر اگمان ہے کہ نواب محمد احمد خان کا قتل بھی شاید FSF کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے اس شک کو مزید تقویت اس بنا پر پہنچی کہ جائے وقوع سے گولی بارود کے جو خول قبضہ میں لیے گئے تھے اس کا بور ایمونیشن FSF کے پاس زیر استعمال ہے یہ غیر مصدقہ مخبری ہوئی کہ انسپیکٹر غلام حسین ASI اور افتخار FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی لائن چھوڑ گیا جی اور ان کے اب میں وہ جو اس پریشر میں ہونا جی کہ مجھے جلدی کرنی نہیں وہ وہی امپورٹنٹ اور ان کے دیگر ساتھی اس قتل کے ذمہ داری ہے یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی جنہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا اب یہ امپورٹنٹ ہے جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ مقدمہ حاضہ جو عدم پتہ ارسال ہو چکا ہے
उसकी तफ्तीश FIA अपने हाथ में फौरी तौर पर ले ये हुक्म मुझ तक बवसातत जनाब डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन पहुंचा, जिस पर मैंने मिसल थाना इचरा से हासिल की. This is very important. He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he is writing on 24th of July 1977. हासिल की, जिसकी तरीरी इतला नोट की शक्ल में DSP इचरा को कर दी. कल इस किस्म की इतला चिट्ठी DIG साहब को दी जाएगी. अब जनाब ये तो हो गया इसका क्लेम. अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल उस पुलिस स्टेशन से कैसे ली गई. एक इस पॉइंट में मलिक साहब एक बात इसमें कि ये जो मुखबर की इतला थी, कोई इन राइटिंग कोई चीज है कि मुखबर की इतला को कहीं पे रिकॉर्ड किया हो? नहीं वो ये प्रोटेक्टेड है एविडेंस एक्ट में कि आप पुलिस को नहीं पूछ सकते कि आपको जुर्म की इतला कहाँ से मिली. And there is a wisdom behind that. नहीं होती, नहीं वो हो नहीं सकती. सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो मुखबर ने बयान किया उस बयान को कहीं पे राइटिंग में किसी रिकॉर्ड पर आया कि ये हुआ है? यही है जो मैंने पढ़ी. मगर ये तो कुछ और कह रहे हैं. ये कह रहे हैं ये इतला डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन को दी गई. इन्होंने दी ना मुखबरी की इतला. नहीं अभी सवाल नहीं आया. हाँ. सवाल ये है कि डायरेक्टर जो थे FIA के, उनका कोई बयान है? वो गवाह भी नहीं ना उनका कुछ. वो कह सकते हैं कि मुझे मुखबर ने दी, मगर ये तो फिर मुखबर तो छोड़ें, वो तो ठीक है आपकी बात, मगर यहाँ तो उन्होंने बयान कर दिया कि ये बयान डायरेक्टर FIA ने मुझे दिया है. बिल्कुल ठीक. तो कम से कम डायरेक्टर FIA से तो पूछ लो कि भाई ये बात. मैं I will respectfully submit, sir, this is not that important. This is not important. Okay. Important point is when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? तो ये अगला क्वेश्चन है जी. वो तो अब मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जरा पॉइंट को क्लियर कर दूं. अब जनाब मैं अगेन आई विल रेफर टू फाइल नंबर 6 ऑफ द पुलिस फाइल, page 108. जी. अब ये भी मैं अगर इजाजत दें तो पढ़ूंगा. जी प्लीज. जनाब अली मिल गया सर? Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, I have. You're only concerned with Shah Sahab. मैं इसका जवाब प्लीज प्रोसीड. अभी नहीं दे सकता. गुजारिश है जब भी आप जवाब दे फिर हमें भी बता दें. ठीक है. गुजारिश है कि बहुक्म सेंट्रल गवर्नमेंट मुकदमा उन्वान बाला की तफ्तीश FIA लाहौर कर रही है और मुकदमा दाखिल दफ्तर अदम पता हो चुका है. वो तफ्तीश कर रहे हैं, मुकदमा दाखिल दफ्तर हो चुका है. बजरिया दरखास्त हाजा इस्तदा है कि मुकदमा हाजा की रिपोर्ट अदम पता लफ कागजात बसिलसिला तफ्तीश मुकदमा महावत से हासिल करने का हुक्म सादर फरमाया जाए. ये मोहम्मद बूटा इंस्पेक्टर साहब हैं. 8/7/1977 को ये लिख रहे हैं और अगर राइट साइड पे देखें वो वसूल कर रहे हैं 8/7/77. 8/8 इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है कि इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहे हैं 24/7 से और डॉक्यूमेंट ले रहे हैं 8/8 को. इन्वेस्टिगेशन उसने लास्ट जिमनी 95 का जिक्र किया 1/10/75. बिल्कुल वेरी राइट. अब ये बात क्लियर हो गई कि जनाब इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइल जो है वो बाद में ली गई और उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है. अगर आप उसको देखें ना जो जिमनी पहली जो अब्दुल खालिक लिख रहा है वो कहता है कि रिकॉर्ड थाना इचरा से हासिल किया गया और हासिल कब हो रहा है ये होगी. अब आ गया अगला क्वेश्चन
कि ये री-इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई? ये question, it's a very important question as put by my Lord, Mr. Justice Mother, and even Justice Halali. There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the re-investigation of this, for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal, patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for re-investigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act. This investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब, ठीक है सर, आगे तो चलें. मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस या कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखें ना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, दूसरे वॉल्यूम में नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page sir 690. PW 41. Even sir, I'm addressing my Lord Justice Yaya, even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी, वॉल्यूम 4 आ गई हाथ में, आप बताइए. जी सर, पेज 690. 690. ये टाइप पेज है. ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी. अच्छा, ये एविडेंस का पेज है. 690 जनाब, यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी. मिल गया है? नहीं मिली? मिल गया सर, बाकियों को अभी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो. जी मिल गया. चलिए सर, वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा. जी फरमाइए. जी सर. जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें
कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं, ये भुट्टो साहब के वकील नहीं हैं, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन 3 मुल्ज़मान ने no, those who have been hanged, They were Co-accused. they were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. Co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate, Falsufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftakhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. He is their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. Hey, was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was Retract हो गया ना? 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने। अब Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा ये कैसा बात? I am ready for you even for a month. No, I just अगर want आप to know problem- that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even before In that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस confession में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो relevant भी नहीं है उनके लिए। So confessed. Their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Muhammad Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF, probably he was Inspector FSF, and he became approver. He's the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। री इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी। नहीं सर, वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी, वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें, 693 ये 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, but where is the order? Where is the order? Such order is available. सही है, वो अपना जो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए। 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं, कुर्बान सादिक इकराम साहब हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I did not come across any written order entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये है। अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ।
Now I'm coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a यहाँ खत्म कर दें एक सिर्फ बात है. In the meanwhile, any private complaint was also filed. Yes, sir. Well, I will deal that. I will deal अच्छा, that. you will come there. वो बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा अच्छा, ठीक. बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी. आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए. 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा. अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज मैं ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, Manzoor Malik Sahab. I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this this job. बड़े बड़े लायक आदमी माशाल्लाह सजाद हसन साहब बैठे हैं, अजहर रूहानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट सेड छोड़ो जी. Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट निकाल. एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 years बैक. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग. तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of. The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दे तो जी. अब वो ये था कि जी there was a conspiracy between late Zulfikar, उसका टाइम नहीं दिया गया, but obviously that was after the creation of FSF and before Masood became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Mia, Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? Arshad. Iftikhar एक हो गया, दूसरा Arshad. और दूसरा अरशद है. Arshad. तीसरा गुलाम हुसैन. अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे. वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे ही मुल्ज़म थे. फिर
Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded, where he confessed this, that I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as witnesses. Those remaining three, they remain stick to their confession. Pardon was granted by the provincial government or the federal government? No, sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question? No question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था, बिल्कुल था उसका भी था। पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने। पहले इंटरम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, स्टेटस चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस, इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो एक्ट्रेस के थे उनको भी सजाए मौत। 5 persons were hanged for 1 injury. 5 persons. जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था। सर ये तो ला है ना कि अगर इंटेंशन ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है। वो बहुत क्लियर है, वो 301 क्लियर। अब चले सर, आगे चले जी। Whenever you are tired, let us know. We can take a break. No, I am not. I'm not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. No, sir. Prayer? और 2 बजे? हाँ, 2 बजे। 2 बजे करते हैं। Sir, Challan, now I'm talking of incomplete Challan, as your lordship has said. I will show you the incomplete Challan. It was prepared on before that, no transfer. And if your lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think Challan ke baad hi hua. Incomplete Challan was prepared on 11th of September 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete Challan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim Challan is at page 282 of volume 7. Volume 7 जनाब देखें। Page sir 282. देखना में ठीक है सर, वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना, देखिए 7 मुल्ज़म है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए। हाँ, वो अगली बात है, बस ये सबमिट हो गया सर। अब ये सबमिट हो रहा है 12th of September 1977, and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. Of the same volume. ये ज़रूरी है जी। ये ज़रा पढ़ लें। ये ज़रूर सर, ये बड़ा ज़रूरी है। कौन सा पेज? सर पेज 3 to 4 volume 7 जी। 3 to 4 जी पढ़िए। ये सर सरकार बनाम, ये उर्दू में है जी, बनाम जुल्फकार अली भुट्टो वगैरह, विद इन ब्रैकेट लिखा है 7 कस, ये 7 लोगों के खिलाफ चला। ज़ेरे दफ़ा 302, 307, 120B, 109 पे ताज़ीरात पाकिस्तान। नामुकम्मल चलान मुकदमा हाजा आज अदालत पेश हुआ। मुल्ज़मान जुडिशल हवालात में हैं।
چالان بعد پڑتال درج رجسٹر ہو کر بعدالت جناب سیشن جج لاہور بھجوایا جاتا ہے برائے مزید کاروائی کیونکہ جرم زیر دفعہ پہ کی سماعت کی مجاز صرف عدالت سیشن ہے. No sir, this is the answer of your query. So they are not required to examine anything. They will send it to the court of session. اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ 12 تاریخ کو اس نے بھیج دیا سیشن کورٹ کو. پھر سر میں آگے چلتا ہوں. اچھا 190 اور ریسیو بھی ہو گیا سیشن ریسیو بھی سیم ڈیٹ پہ ہوگا. اسی ڈیٹ کو یہ سیشن کورٹ کو ریسیو ہوگا اسی پیج پہ اسی پیج. ٹھیک ہے سر کچھ نہیں اگر اجازت دے. نہیں میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پش بھی کر رہا ہوں. نہیں پش اچھا ٹھیک جی بڑا ضروری ہے. 12 تاریخ کو یہ چالان سیشن کورٹ چلا گیا. اب دس از دا فرسٹ آرڈر آف دا لرنڈ سیشن جج which I have not seen anywhere else. Received today. PP to check and report by 14th of instant. اب پی پی سے پبلک پروسیکیوٹر یہ وہ جج صاحب تھے. دین ہی واز جج آف دس آنریبل کورٹ ایز ویل. ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی از الائیو ناؤ. سیشن جج یہ سیشن جج کون؟ اعجاز نثار صاحب ہمارے. اچھا اعجاز نثار صاحب سیشن جج لاہور تھے. آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. یہ ان کا آرڈر ہے. اب اسی دن اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ان نے کوئی آرڈر کیا اس نے سیشن جج صاحب وہ موقع ہی نہیں ملا. وہ کیا انہوں نے تو ایک آرڈر کیا نا جی. انہوں نے پی پی کو بھیج دیا. انہوں نے پی پی سے کہا کہ آپ رپورٹ کریں ایگزامن کر کے. ٹھیک. اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ آف لا. ٹھیک ہے. So PP has nothing to do with that. That is So he did not exercise his judicial mind on nothing. And PP submitted report of what happened next. That is more important. پی پی سے صرف اسسٹنس مانگ رہے تھے. وہ بہرحال ان کو سمجھا کے چلیں کچھ بتا دیں کیا. مجھے نہیں پتا, میں کمنٹ نہیں فردر کرتا اس پہ. اب اسی دن اب یہ یہاں امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. اسی دن 12 تاریخ ہے اور نیکسٹ ڈے پہ یہ کیس ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. یہ دکھائیں یہ ریکارڈ سے دکھائیں. ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ. اب میں جناب your lordship is highly respectable for me but I am also I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. کیوں سر؟ Sensational. Suspense. وہ بات ہی You've created suspense. نہیں, it's not suspense sir. جی Your lordship, we are waiting for the next thing you say. جی Volume 7 page 1 sir. Volume 7 Page 1. same volume. Same volume. And I will like to read the caption of this application, the title we call, The State versus Mr. Z. Bhutto, etc. So it's very important. Yesterday some lawyer told that said perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state, etc. Order hai 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is this? This one, this just few lines order. ذرا پڑھ لیں اس کو. میں پڑھتا ہوں. اب دیکھیے, مسٹر انور, میسرز انور, ایم اے رحمان, اعجاز حسین بٹالوی and فاروق بیدار advocate, all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows. Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No. یہ تو اگلی بات ہے جی. پہلے تو اس کو ہضم کرے نا جناب کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ بڑی پینفل سچویشن. آپ اتنا مرغن غذا نہ کھلائیں کہ ہم ہضم نہ کریں. نہیں آپ کریں گے. میں کہتا ہوں یہ تو سر بڑی باتیں ہیں نا جی. ابھی تو اور باتیں اتنی زیادہ آئیں گی تو بہت مشکل ہو جائے. اسی موقع پہ ذرا وہ پروویژن بھی بتا دیجئے. 26 اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں سر. وہ بعد میں پڑھیں گے. پہلے میں ایک اور بات بتا دوں, وہ میں نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ تو بہت بڑی بحث ہے اس ایشو پہ. ملک صاحب اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے 127T, ٹرانسفر یہ ٹرانسفر سر ٹی فار اپلیکیشن نہیں ہے. نہیں اپلیکیشن ہے نا جی. اپلیکیشن ریکارڈ پہ نہیں ہے. ریکارڈ پہ نہیں ہوگی
नंबर लगा हुआ है। जरा इसमें इस पेज पे सफा नंबर 2 पे 2 नंबर हैं, एक है क्रिमिनल ओरिजिनल 60-77। सर वो ये नहीं है, वो अब ऑर्डर आ गए हैं ट्रायल कोर्ट के, जो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई है ना, ये ऑर्डर उसके हैं। ये ट्रांसफर एप्लीकेशन से सिर्फ यही रिलेट करता है, वो उसके नहीं है। ये बेसिकली जो स्टाफ ऑफिस है ना आपका, उसने एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब कौन है? मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब। ये सर ये अगला है, इसको कंफ्यूज ना करें इसके साथ, ये अगली बात है। इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे यही ऑर्डर है। नहीं, ट्रांसफर एप्लीकेशन को नंबर तो लगा हुआ है 127T। को लगा है ना जी, उसी का ऑर्डर है ना, वो कॉपी कहीं नहीं है, वो कॉपी है ही नहीं। और अगली बात मैं बताता हूँ ना जी, एक तो ये आपने नोट कर लिया कि द स्टेट हैज मेड जुल्फकार अली भुट्टो एंड अदर एज रिस्पोंडेंट, दे वर रिस्पोंडेंट, बट नो नोटिस, no notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the challan was submitted. Before that it could not be filed. Malik Sahab, this order was pending before any higher forum? Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for likes of whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfikar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent, and the state was conscious, prosecution was conscious that they people are relevant, so This they was the were responsibility of the court. yes, of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th this application could not be filed because under section 526 only a case pending before the court can be transferred. ये पॉसिबल है 13 कोई फाइल हुई हो जब और ये भी बिल्कुल मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो जरा सेफ साइड पे रहा हूँ। तो ये कहाँ पे पेंडिंग था जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग था ना जी, मैजिस्ट्रेट से चला गया सेशन जज के पास उसी दिन। 12 को चालान सबमिट हुआ, 12 को मैजिस्ट्रेट ने 190 सबसेक्शन 2 उसके तहत उसने सेशन जज को भेजा, और सेशन जज ने उस पर एक ऑर्डर किया, अपने पीपी से कहा कि रिपोर्ट दो। अभी वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, वो रिपोर्ट वैसे पड़ी है फाइल पे, मगर वो पिटीशन होगी हाई कोर्ट को। माय लॉर्ड हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस माइट हैव बीन फाइल्ड ऑन 13th, बट एट द मोस्ट if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September, nothing was pending in any court. And when I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So, no notice. आप कहते हैं कि सेशन जज ने कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, केस उनके पास नहीं था? नहीं, उनके पास तो था, चला गया ना जी, कॉग्निजेंस की कंडीशन नहीं है, वो मकसद ये फ्रॉम ए कोर्ट ऑब्वियसली। और आगे वो भी मलिक साहब ये जो है कि इट शैल बी हर्ड बाय द फुल बेंच। अब ये तो जनाब आप देखेंगे कि क्या ये सुमोटो ट्रांसफर है? No, sir, please. This is not suo motu. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, but sir, then we can only assume it's suo motu. No, because number is there. So, by all fairness, since I am here to assist this court, I will not say. Who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? Why not the accused? Why not anybody else? Sir, ऊपर पढ़े ना, the state versus so and so.
या पढ़ा ना इसका टाइटल? But it may be because every criminal case is the state versus. Yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner is. No, sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo moto, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. Maybe the complainant didn't want to transfer. मैं आऊंगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, they admitted. Yes. वो मैं any application is available on record? तो सर no application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय है. नहीं, अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो सर मैं करूंगा, मगर मुझे आज चलने दें, मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी सालों के बाद. We appreciate that. मैं चाहता हूं कि मैं आगे उस वक्त चलूं जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूं मैं कह सका हूं और मैं समझा भी सका हूं. अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वाले भी होंगे. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी. अच्छा, आपका अंदाजा? नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं तो हूँ, आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. चार्ज का नहीं. No, I think सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है. वो जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है. सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा. चलें. Let us not. नहीं करें सर, कोई बात. अच्छा, अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता. वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा. वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10. ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से? नहीं सर, lawyer थे, and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the chief justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया. वो भी मैं अगर इजाजत. कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को. वॉल्यूम 10 सर. वॉल्यूम किशमिश पेज कौन सा, ये पिटीशन है? नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा, पेज 19 पिटीशन का. अच्छा, पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर. अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर पेज 19 वॉल्यूम 10. मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी. बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह. On behalf of जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल, ये ऊपर है नंबर, मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge. So this is in the state versus the complainant, Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है. पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3.
Page 2 is petition ka. जी पढ़िए. Page 2, ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above caption case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ground ली है. अब ये acting chief अगला है 4 that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint. अब वो जिक्र आ गया जनाब का. My Lord Justice Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. تو سے یہ اعتراض جو پوچھ رہے تھے جناب پچھلی ڈیٹوں پہ یہ اعتراض ہوا اور اس کا آرڈر بھی ہوا. اب وہ آرڈر دیکھ لیتے ہیں. ملا حیدر نہیں مل رہا کہاں سے پارٹ کون سا ہے پارٹ 9 ہے. اچھا سر یہ آپ کا اب پارٹ 9 ہے والیوم کی بجائے کسی جگہ پہ یہ پارٹ ہے کسی جگہ پہ والیوم ہے جی یہ مل گیا ہے سب کو جی مل گیا جی سر پیج اس کا 35 ہے یہاں سے یہ آرڈر شروع ہو رہا ہے جی یہ اس کا آرڈر تو بڑا لمبا ہے میں اس کو سکپ کروں گا 55 پہ کون سا ہے 40 اچھا جناب اس سے پہلے ذرا میں پیرا پڑھ دوں پیرا 14 جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب نے پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے سپریم کورٹ سے بھی پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی آرڈر کا ہاں اسی آرڈر میں لکھا ہے ایٹ پیج 43 سر پیج 43 پیرا 14 بفور یو کم ٹو اٹ یہ اگر آپ ٹائٹل دیکھیے پیج 35 پہ اس میں 2 اپلیکیشنز کا دو ہیں دوسری بھی ہے دوسری کون سی ہے 933 تو وہ والی ہے 933 میں انہوں نے وہ ریکیوزل والی ہے ہاں وہ کوئی اور دوسری والی کون سی ہے یہ ایک تو یہ ہے نا جس میں انہوں نے ان کا پریجوڈس اور باعث دوسری کون دوسری میں کیا ایشو تھا ہاں وہ تھا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کو وہ نہیں کنٹرول کر سکتا دس شوڈ بی پرماننٹ چیف جسٹس مگر وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں یہ اس ریفرنس سے یہ ٹرانسفر کے میں اس لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں جی پڑھیے پیج بتائیں جی پیج 43 سر پارٹ میلوٹ پارٹ 9 وہ ایک سے ذرا آ رہا ہے پارٹ آ رہا ہے بڑا سکیٹرڈ ہوا ہے سر کوئی ادھر آرڈر ہے کوئی جب تک پڑھتے ہیں باقی جناب نہیں وہ آپ پڑھیں گے تو ہم سن لیں گے نہ بھی آئے یہ سب کے پاس ہے جی جی پلیز اسٹارٹ سب کے پاس نہیں پڑھتے تو ہم ستے رہتے ہیں نا جب تک آ جائے گی آپ صحیح پڑھیں گے I will obey every command of the نہیں جی پلیز sir the next challenge is to the oath subscribed to by the acting chief justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting chief justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered
administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। It's a good history lesson. बहुत अच्छा। If nothing else. मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की? और किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state. तो नहीं वो लिखें ना लिखें, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो ही। अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, ये पार्ट 9 के 31 ये पार्ट है जी 9 जी 55 पेज पे जी 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused person under section 120B 119। नहीं skip this। हाँ जी सर ये बड़ा जरूरी है सर, ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो पढ़ लिया जी, कुछ खास बात है तो बताएं सर, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं तो फिर बता दूं तो ज्यादा बताइए। सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है। आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also, ये बस नहीं हो जाएगा सर। देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि अगर जल्दी में कोई चीज़ रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है। जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में स्किप कर देता हूँ, was filed before a magistrate at Lahore by Mr. Iftikhar Ahmed Tari, the complainant against the appellant so and so। अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है। ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी, ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी पैरा 32 जी बड़ा करना was referred to a division bench consisting of Mr. K.M. Samdani J and Mazrul Haq J। अब यहाँ मैं पॉज करूँगा और मैं सबमिट करूँगा कि why notice was not issued to the accused। Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, अब इसको आप क्या कहेंगे? बायस कहेंगे, टैक्ट कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब आप इसको आप नहीं कुछ कहते हैं आप। So मैं कहता हूँ, this is a clever move। जी सर, ठीक है।
یہ کلیور چیز ہے نا جی, یہ باعث سے آگے بات ہے. باعث تو ایک چیز ہے نا کہ آپ کا ایک ایکٹ ہے کچھ اسکپ کر گئے, یہ تو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وائلیشن آف ڈیو پروسیس ہے. وائلیشن بھی نہیں ہے. وائلیشن تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے کاپی چاہیے, مجھے نہیں ملی, مجھے یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. یہ وائلیشن نہیں ہے کہ یہ ایک عجیب سی بات. ہاں بالکل, یہ آپ نے ایک کلیور لیا, بیکاز آئی کین ناٹ ریڈ دا مائنڈ آف دا جج ایز ویل, کہ وہ اگر نوٹس کیا گیا, سو obviously the accused side will argue کہ sir the private complaint is pending before a 2-member bench, refer this 2-member bench. And in that 2-member bench, one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. وہ کمپلینٹ کیوں 2-member بینچ کے پاس ڈالا؟ اب پتہ ہے جی وہ اس وقت چلی گئی ہوگی, پتہ نہیں چلا ہوگا, یہاں کوئی بات ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی, میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتا. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو فیکٹ ہیں. اس میں ایک جج نے بیل دے دی نا. نہیں, یہ کمپلینٹ میجسٹریٹ کے پاس نہیں جاتی, وہیں تھی نا جی پینڈنگ. یہ تو ہائی کورٹ کے سر وہ ٹرانسفر ہوگی نا. نو ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی. نہیں سر ہو گئی ہے. آپ ایسا کریے کہ 56 پیج کے اوپر سے چوتھی لائن پڑھیے, ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کمپلینٹ جو احمد قصوری انہوں نے دائر کی تھی وہ کہاں گئی. یہ پڑھیں. سملرلی ایک کمپلینٹ, وہی ہے. ہاں یہ پڑھیں یہاں سے. ہاں میں سر وہ جلدی میں آتا ہوں نا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی کلیئر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, میں نے سارا پڑھنا تھا, مجھے ڈائریکشن آ جاتی ہے. ہاں پڑھیں. سملرلی یہ سر چوتھی لائن پیرا 56 سے, similarly a complaint case filed by Ahmad Raza Kasuri in regard to the murder of his father Nawab Muhammad Ahmad Khan was transferred this court by order dated 15th of August 1977. پہلے ہی ہو گئی تھی یہ پہلے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کمپلینٹ پہلے ٹرانسفر ہو چکی ہے نا. اسی لیے جو میں نے جو آرگومنٹ جناب کو دیا کہ موو کیا تھی, کرنا کیا تھا, کیونکہ اس 2-member بینچ میں سے ون آنریبل جج جسٹس سمدانی allowed bail to Zulfikar Ali Bhutto in the state case. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلا ان کا موو یہ تھا کہ ہم یہ کمپلینٹ آئے میجسٹریٹ سے ہائی کورٹ آ جائے. آ گئی. ڈیورنگ دیٹ پروسیس ان کو بیل مل گئی. جب بیل مل گئی دے سیڈ اوکے لیٹس ٹرائی another thing. ان نے پھر ایک اور موو کیا اور ان نے جو مین کیس تھا اس کو ٹرانسفر کیا نوٹس کے بغیر. ٹھیک سمجھ آ گئی نا جی بات, ویری کلیئر. اور یہ بھی بتا دیں کیا میجسٹریٹ سے وہاں ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو سکتا تھا؟ یہ بھی آپ نے اب یہ بالکل ہو سکتا ہے سر. اب اس پہ لیکن ایک بات اور کلیئر بھی ہو گئی نا جی سر, کہ ایٹ لیسٹ ٹرائل کورٹ کے نوٹس میں تھا کہ ایک کمپلینٹ یہاں پڑی ہے اور نورلائی کیس کے تحت اس کو ساتھ چلنا چاہیے. نہیں مگر سر وہ تو دیکھیں نا, اب میجسٹریٹ تو یہ آرڈر نہیں کر سکتا نا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ہائی کورٹ کے پاس, نہیں ہائی کورٹ کے پاس ہے نا جی, مگر وہ دوسرا چالان جب آیا میجسٹریٹ کے پاس, اس کے پاس تو he had no option except to send it to the court of session. وہ تو under the law he cannot look at this complaint. My Lord Justice Yahya has very aptly summarized the situation. Yes. And I think he's fully understood what was the move. Though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice. Yes. For touching the merits of the case. So step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record. In every respect. ٹرانسفر ہوئی تھی وداؤٹ نوٹس, کمپلینٹ بھی وداؤٹ نوٹس. کمپلینٹ تو سر, کمپلینٹ میں تو کیونکہ کمپلینٹ میں اس وقت تک accused has not been summoned, اس میں تو وہ ابھی 202 کی انکوائری نہیں ہوئی نا, تو وہ تو تھا ہی کوئی نہیں. وہ ہو گئی اگست میں ٹرانسفر ہو گئی. اس میں مین کاگنیزنس لینے سے پہلے ٹرانسفر ہو گئی. جی کاگنیزنس تو نہیں لی نا جی, انہوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. مگر وہ اب اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں گے 526 کو ابھی پڑھیں گے ہم, کیونکہ اس میں تو اور بہت باتیں کرنی ہے. اس پوائنٹ پہ بہت آرگومنٹس ہیں. یہ کیس ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. فرسٹ سٹیپ میں تو میجسٹریٹ نے سیشن جج کو بھجوانا تھا, وہاں سے پھر ہائی کورٹ جانا تھا سٹیپ. ہاں جی, تو ابھی اسی کے پاس تھی نا وہ کمپلینٹ, اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ریکارڈ یہی کہہ رہا ہے وہ کمپلینٹ جو ہے ریکارڈ پہ نہیں ہے قصوری صاحب والی.
وہ میں نے لیٹر بھی لکھا تھا آپ کے آفس کو, انہوں نے مجھے کوئی 10 کاپیاں بھیج دی, ساری ایک ایک صفحہ دیکھا. وہ کوئی طاری صاحب کی کمپلینٹ ہے, کوئی کسی اور کی کمپلینٹ ہے, جو قصوری صاحب نے فائل کی تھی وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے, اور اس کمپلینٹ پہ ہائی کورٹ کے کیا آرڈر ہوئے وہ بھی ریکارڈ پہ. اب تو میرے پاس جو کچھ ہے میں تو آپ کو اس سے بھی اسسٹ کر رہا ہوں کہ جناب یہ اسٹیٹ آف افیئر ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک سٹیپ ضروری ہے, ایک ایک سٹیپ ضروری ہے. اگر جناب چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے تو یہ اس میں بہت ضروری ہے کہ اس چیزوں کو دیکھا جائے. سر اب میں پڑھوں سر. By the order of so and so, another complaint, Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, یہ بھی کوئی اور ہے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir, para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. یہ 12th کو ہے, انہوں نے 11th لکھ دیا. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, حالانکہ ایکٹ اس نے 190 میں کیا, یہ جج صاحب نے 193 لکھ دیا. The same day to the court of session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. اب وہ کون سی گراؤنڈ ہے, we don't know, nothing is on the record. انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہوئے تھے تو یہ بھی کر دی. اب جناب اس کا 34 کا میں پڑھوں گا, پورا تو میں نہیں پڑھا, میں اوپر سے 7-8 لائنیں چھوڑ کے نیچے جہاں پہ 10:30 AM لکھا ہے نا جی, ایک لائن میں 10:30 AM, میں اس سے آگے پڑھوں گا. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused. In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. اب یہ ملزم کو بھی یہ ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ 5 ججوں پہ اعتماد زیادہ کرو. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, یہ کہاں ہے وہ جو ٹرانسفر ہو گیا, وہ پڑھ دینا. ہاں یہ سر, اب میں سر باقی ابھی اسکپ کر رہا ہوں. پیج 63 جس میں یہ ٹرانسفر کے بارے میں بات آ رہی ہے, پیج 63 سر, پیرا 42. بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے سر, بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا پینفل ہے, بڑا پینفل ہے پرسنلی فار می سر. Another ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. اب آپ یہ بتا دیں, میں نہیں, I can't comprehend sir, کہ 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. اور اس سے پینفل بات اگلی ہے. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. اب جناب یہاں پہ میں ذرا 526 کا 6 پڑھ دوں گا تاکہ جناب کو پتہ چلے پھر کہ کیا ہوا ہے. جناب اب آپ وہ جو کر رہے ہیں نا کہ موو, کیا موو ہے, اب یہاں سے کلیئر ہوتی ہے. یہ جناب 526 سب سیکشن 6 سر پڑھوں سر جی. Notice to public prosecutor of application under this section.
every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें अब इसको जनाब क्या कहेंगे? Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट बदयांती क्या होगी? What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस की. मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ हैं? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं. आऊंगा. मैं तो आपको देखे, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप. Whether for this presidential reference or not, but good history lesson. Yes sir, बिल्कुल and है. for students of law. बिल्कुल है. मैं कहता as हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिया. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, तो खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे, केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन. आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है. अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए. अब मैं आ गया जी, आगे बढ़ें सर. आगे सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? तो फिर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है. वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई. वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है. नहीं इस पे आ रही है ना जी. 2 दरखास्तें मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से. नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ. वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए एक सेकंड के लिए. एक नंबर पेज पे जी, वो एक नंबर पेज जी फरमाइए सर. मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए. इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट. यस. जरा सा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ. इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल. नाउ द सेम बेंच इज हियरिंग दैट इट हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड. एक ये पॉइंट है. वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन द प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है.
سر اسی تو پھر یہ وہ اتنا لمبا اب وہ ایکچولی کیا کر رہے ہیں, اب وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. unless I'm wrong. بالکل ٹھیک, بالکل 100% ٹھیک ہے. آپ ہوا یہ کہ ٹینٹیٹیو آرڈر نہیں ہے, یہ دیکھیں سبجیکٹ ٹو نوٹس لکھا ہے از ٹرانسفر ٹو دی اسکوائر فٹ ٹرائل, فل اسٹاپ, ختم ہو گئی. نہیں, that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 پہ دیکھیں نا. سر نہیں, وہ دوسرا دیکھیے منظور ملک صاحب, go back to page 2. Page 35 says so. نہیں سر نہیں, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by volume. یہ تو conclusive order آ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سر میں عرض کرتا ہوں, Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. He's saying that, man. from where you are reading sir, Sir, page 35 volume part 9. ذرا دیکھیں نا, انہی اپلیکیشنز پہ پھر آرڈر آ رہا ہے نا. نہیں, یہ وہ اپلیکیشن نہیں ہے سر, وہ اپلیکیشن ہے 127T of which have already been dismissed by a short order. وہ تو اور ہے نا, یہی سی ایم ہے نا, پہلے ڈسمس یہی سی ایم ہے, نیچے ان کا شارٹ آرڈر کے نیچے آرڈر. میں شاید اپنی وضاحت نہیں کر سکا. میں اگر آپ کو پیج نمبر 2 پہ ہم جائیں واپس, جو ہے in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. وہ اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں, میں Which was strange. سر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ایکیوز کی طرف سے یہ جو مسلینس اپلیکیشن لکھی ہے, یہ بھٹو صاحب نے یہ ڈفرینٹ ہے, کور کر رہے ہیں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کو ڈسمس کیا ان دونوں اپلیکیشن کو شارٹ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ, if it is to be treated as an appeal, it should have been before some other bench. پھر ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خود ہی پھر اس کو ریزننگ دے رہے ہیں. سر وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias, this was one of the ground of bias. But against one judge. One judge was obviously, sir. مگر انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے میں بہت سی چیزیں کر دی. سر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, وہ تو پھر جب یہ آپ چیف جسٹس کو کریں گے تو باقی تو شامل ہو ہی جائیں گے نا, وہ تو سارے شامل ہو جائیں گے اس میں. وہ میں جو بات کر رہا ہوں, آپ کوئی انسینویشن تو نہیں کر رہے ہیں, کیا آپ کوئی انسینویشن تو نہیں کر رہے ہیں ادھر. یہ تو محاورہ ہے جی, جو سمجھنا چاہے مجھے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو جس نے محاورہ بنایا. ہماری عدالت بڑی ڈیموکریٹک ہے, ہر جج اپنے ڈیسینٹ بھی کرتے ہیں, آپ نوٹ کر رہے ہوں گے. یہ تو بڑا ہیلدی سائن ہے نا جی, ڈیسینٹ کرنا کا مطلب ہے کہ یو آر الائیو. آپ ایک جو زندہ ہے وہی ڈیسینڈ کرے گا نا, جو ڈیسینڈ کرتے وہ ہاتھی کے پاؤں سے نکل جاتا ہے, جو ڈیسینڈ کرتے وہ ہاتھی کے پاؤں سے نکل جاتا ہے. اب آپ میں نہیں زیادہ لبرٹی نہیں لینا چاہتا. اچھا سر, would you like to take a break at this point? کر لیں جی, کر لیں. نہیں, کیونکہ آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. سر میرے نہیں, ہمیں ہے فکر. کوئی کر لیتے سر, آپ بتا. میرا خیال ہے اس پوائنٹ کو ختم کر لیں, یہ جو ٹرانسفر والا, چلیں یہ ختم, اس کو ختم چلیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. I am with you sir, I am with you. یہ ختم کر لیں. No sir, now I will like to read section 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, reinvestigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party, such order is expedient in the end of justice. آپ نے پہلا والا چھوڑ دیا, وہ بھی سر کر لیں, اس کو بھی شامل کر لیں. میرا میں جس پوائنٹ پہ جلدی, fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. یہ بالکل ٹھیک ہے سر, وہ آپ کافی چیزیں اس میں. اگر یہ لکھنا تو چاہیے ججز کو. سر میں تو کہتا ہوں لکھنا چاہیے نہیں,
ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So, but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा subsection 2. ये बड़ा important है सर, बड़ा important है. When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important. Ab, your lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the court of session, from the court of session to another court of session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of session का procedure. Session या magistrate का. अगर आपने magistrate से किया है, so you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your lordship, to section 374. Kindly see. What is 374? यही जो है कि confirm कौन करेगा death penalty. नहीं सर, मैं अभी आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. High Court 5-member bench उसको death penalty दे रही है, तो confirmation क्या Supreme Court करेगी? 274, 376. सर मैं सर इजाजत दें मुझे. Section 374 Code of Criminal Procedure, इसका caption है सर, sentence of death to be submitted by the Court of Session. When the Court of Session passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court? अब now, this provision is part of procedure of Court of Session. Your lordship has gone through many judgments. Every judgment of a session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. बिल्कुल arise होते हैं. One, firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right, very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, are only three scenarios. Very precisely. अब आपका, what is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको correct करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. Same ही ठीक है जी. No, transfer is something else. नहीं सर नहीं, एक ही वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड करने पहले देखिए ना, विड्रॉल है, एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है. विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी. अब ये अग्रीड के आपके ख्याल में अब ये चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है, आप हमें ये जरा मैं जरा यू आर गेटिंग डिट्रैक्टेड.
نہیں جی سر آپ کیا پروسیجر آف یس پروسیجر تو وہی رہے گا نا سیشن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سیکشن 374 از پارٹ آف دا پروسیجر اینڈ دین دیر از اے ویری گڈ ججمنٹ آن امپورٹنس آف دس سیکشن آتھر بائی مائی لارڈ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ. Thank you, sir. I'm just reading that. You're only concerned today with Shah Sahib. This is PLD 2021. نہیں پہلے یہ آپ ہمیں بتائیں نا کیا سر یہ سننے میں بتاتا ہوں وہ بات آپ کی بات میں نے نوٹ کر لی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں مگر یہ تھوڑا سا جو PLD سر 2021 سپریم کورٹ 600 یہی ہے اب اس کا پیرا 6 ہے جی پھر 7, 8 آپ کا ججمنٹ ہے نہیں میرا نہیں شاہ صاحب کا ہے شاہ صاحب از دا آتھر جج ہے آپ سگنیٹری تھے اس میں ہاں یہ بات یہ صحیح ہے بٹ آئی ڈڈ ناٹ آتھر پیراگراف سر پیرا 6 سے اگر کہتے میں پڑھ دیتا ہوں نہیں تو آپ خود پڑھ لیجیے نہیں صرف بتا دیں کیا پیرا 6 ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے یہ اور یہ ڈیوٹی اس سے بڑی ہے اپیل جو ہے وہ رائٹ ہے This is the duty. And from my personal experience as a judge of the High Court, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tariq was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless reference is. There is no bar if no appeal has been filed. اپیل کے لیے نہیں ہے یہ ریفرنس کے لیے. Now coming to that point کہ first interpretation, my interpretation that if we read these 2 provisions together, so I will submit that this a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court because of 374, because otherwise it will become redundant. اگر اس کو ریویژن تو اپلائی نہیں ہو گیا نا وہ کون سی سر وہ بھی ہے ایک وہ بھی پاسبل سر اب 5 ممبر بینچ سن رہا ہے تو اس کا 10 ممبر بینچ 9 ممبر کے پاس داخل ہو جاتا ہے. یہ ایک ریلیٹڈ کوسچن ان پاکستان جوڈیشل ہسٹری has a murder trial ever been conducted by the High Court? بالکل بالکل سر اس میں murder trial میں یہی عرض کرنے لگا جو ہم نے ریسرچ کیا میں نے نہیں کی کریڈٹ گوز ٹو دیز 2 young barristers. انڈین جورسڈکشن میں ایک بھی کیس نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں چھوڑو انڈین جورسڈکشن میں نہیں ہے ایک بھی کیس نہیں ہے سنس 47 till 1970 ہم نے 77 تک دیکھا تاکہ وہ پیریڈ رہے. پاکستان میں 2 کیسز ہیں دو ایک کیس ہے کراچی کا دیٹ واز اگینسٹ گوہر ایوب son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. Karachi incident تھا کوئی اس کے کمپلیننٹ نے فائل کی کہ جناب مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا تو گوہر ایوب نے بھی کر دی دونوں نے کر دی. دیٹ کیس واز ٹرانسفرڈ. مرڈر کیس تھا یہ مرڈر کیس تھا کمپلینٹ تھی ابھی وہ دیٹ میٹر وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے وہ جو کمپلینٹ کیس والا تھا اس کی پٹیشن خارج کر دی اور دوسری انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ابھی کاگنیزنس اس نے انکوائری نہیں کی تھی اس میں وہ ججمنٹ ہم دے رہے ہیں جناب وہ خود دیکھ لیجیے گا. رپورٹڈ ہے ان رپورٹڈ نہیں رپورٹڈ ہے جی سائٹیشن دے دیں بتائیے جی مجھے دے دو. 1968 پاکستان کرمنل لا جرنل یہ کراچی ہے نا 1675 اور یہ سپریم کورٹ میں کیا گئی 1675 سر 1675 ویری رائٹ سر 1675. اس میں کیا تھا کہ یو کین ڈو اٹ ہاں جی اٹ کین بی ٹرانسفر. یس انہوں نے
یہ بات نہیں کہ اس ایشو کو نہیں ڈسکس کیا کہ 374 کی. یہ آپ خالی بتا رہے ہیں کہ ایسا کیس ہوا تھا. نہیں یہ ہوا اور اس میں دونوں پارٹی نے کہا مگر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس میں کنفرمیشن کی بات کا کیا ہوا؟ کون سی کنفرم وہ فیصلہ ہی نہیں جو ابھی تو ٹرانسفر ہوا ٹھیک ہے ٹرائل کی وہ تو پھر واپس ہو گیا. یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا PLD 1965 سپریم کورٹ پیج 496. سپریم کورٹ نے جو کمپلیننٹ 1965 کیسے 68 کا تو ہائی کورٹ کا کیس ہے. سر وہ 65 میں فیبرری اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رپورٹ لیٹ ہوا. یہ رپورٹ لیٹ ہوا رپورٹ PLD کب کی PLD ہے سر 1965. یہ رپورٹ لیٹ ہو گیا واپس بھیج دیا. وہ واپس بھیج دیا. پیج سپریم کورٹ پیج 496. یہ ریزنز کیا دی تھی ملک صاحب واپس بھیجنے کی؟ سر وہ ریزن اس کا میڈم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ مجسٹریٹ نے ابھی تک اس پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, ابھی تو انکوائری نہیں کی تو کیسے ٹرانسفر ہوگا, پریسیڈنٹ نہیں ہے کچھ نہیں. اور دوسرا کیس ٹرائل کی اور کوئی کچھ نہیں ایک اور ہے جی, وہ ہے کیس وہ جو سابق گورنر تھے امیر محمد خان, ان کا کیس بھی ٹرانسفر ہوا تھا ہائی کورٹ میں, مگر وہ بھی دونوں کی ریکویسٹ پہ ہوا تھا, کمپلیننٹ بھی اور دوسرا بھی. اس کا ٹرائل ہوا نہیں ہوا یہ کچھ نہیں مجھے پتا, کیونکہ میں نے اپنے طور پر بھی ہائی کورٹ سے پتا کرنے کی کوشش کی تو کوئی ریکارڈ نہیں ملا ہمیں, بٹ وہ بری ہو گیا میرا, مگر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. ٹرائل ہائی کورٹ میں ہوئی تھی ہیئرنگ دی کیس اور وہ اس میں بری ہو گیا. اسد ملک اسد was the accused. Judge صاحب that is not a reported judgment, اس لیے ہمیں نہیں ملی. I don't think it was reported. It was not. But it was. This question was not considered. No. Self defense was taken. وہ اب وہ بھی ججمنٹ لکھ لیجیے, پاکستان کرمنل لا جرنل کون سی کیا کرتی ہوں, پاکستان کرمنل لا جرنل 1969 پیج 1058 لاہور کا کیس ہے جی. یہ امیر ملک یہی والا نہیں, ملک کیا نام نے بتایا, ملک اسد یہ والا کیس ہے اسد کا جی. یہ ویسے چوہدری صاحب فرما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی فرما رہے ہیں. مجھے بھی ایسا بتایا گیا کہ وہ بری ہو گیا, مگر میرے پاس ججمنٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے نہیں بتائی بات, کیونکہ میں نے کہا کہ پھر وہ ڈیفیکلٹی ہے. بٹ اس میں بھی دونوں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں. اور یہ جو پوائنٹ میں نے آج ریز کیا 374 کا, دس ہیز ناٹ بین کنسیڈر ان اینی ججمنٹ. وہ اگر اکٹھے لوگ تو ویسے ہی نہیں, وہ ہو گیا نا جی. نہیں پہلے بھی دونوں نے کہا نا جی, دونوں کیسوں میں. This jurisdiction, should we expound on this or not? In this case? No, not at all, not a touch even. آپ دیکھ رہے ہیں, میں کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں, ہم آپ جو jurisdiction استعمال کر رہے ہیں advisory, should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must. Sir, you are here to do complete justice. Not with the people, but history as well. Or something, which has not been considered by any court before. نہیں, یہ ریز کہاں سے کنسیڈر ہوتا جب آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے. Is this a good time to break now? میں تیار ہوں جی, جب ابھی کر لیں. نہیں, میرا مطلب کہ آپ کا کوئی سیکوینس نہیں توڑنا چاہتے ہیں. سب یہ ہو گیا جی, یہ ٹرانسفر کی حد تک میں آئی تھنک آئی ایم کلیئر. 374 کو بھی آپ نے میٹ کر لیا, وہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سیشن ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل مرڈر کیس جو ہے اس کو ٹرائل پہ نہیں جانا. نہیں, میرا یہ ہر کیس جس میں ڈیتھ سینٹینس ہے. Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my judgment, very good interpretation, very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank you. آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہے, از دیٹ گڈ؟ آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. از دیٹ گڈ انف فار یو؟ 2:30 بجے انشاءاللہ. 2:30 تھینک یو. دیکھ لینا, خیر رکھ لینا کاشف صاحب. میں اس کی دے دوں.
मत हो फाइल वो निकाले कि नहीं जी May I proceed, sir? जी प्लीज Sir, now I will draw your attention. आप समराइज कर देंगे जो सिर्फ पॉइंट्स थे जो अभी तक आपने किए हैं? हाँ, बिल्कुल. बस हम सिर्फ जस्ट 1.123 आपने पहले बताया ये कर लिए थे वैसे जैसे समरी. No. Sir, number one submission was that this investigation was closed in accordance with law by the order of the magistrate. But reinvestigation started without any authority, without any written order from any quarter, and without getting any order from the magistrate. This was my first submission. And adding here, investigation started on 24th of July 1979, whereas record of the case was taken on 8th of August 1977. So this was my first submission. Next submission was, sir, it was incomplete, challan was submitted before the court on 12th of September 1977. It went to the session judge on the same day, and on the very next day an application filed by the state for transfer of this case was allowed without any reason and without any notice. And accused were summoned to appear before the High Court as a trial court, and thereafter an application was submitted by Zulfikar Ali Bhutto where bias was alleged, and this was one of the ground of bias that no notice was issued to me. And while deciding that application, they concluded that under section 526, no notice is required to the accused. And notice is only to the prosecution, which is not a bias, which is not a mistake, but I don't know what is the appropriate word to call this move of the prosecution. So sheer blatant violation of the law, blatant. This, if you talk to a student of law, he does understand what is ordi altrum partem. Such an important point. When they were made respondent by the state, no notice was issued. And then they concluded this, and thereafter my submission was 374 wala. With transfer, sir. My submission was that under section 526 subsection 2, when High Court withdraws a case either on its own or because of transfer, High Court is required to follow the same procedure which is prescribed by the law for that particular court. And in this situation, this is part of the procedure of the Court of Session, that they are required to submit a reference to the High Court, and that sentence cannot be executed unless it is confirmed by two judges of the High Court. It has nothing to do with the appeal. Right. So these was precisely my submissions. Thank you. Now, sir, I will move. And it is quite clear कि इस केस में डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के बारे में कोई ऑर्डर नहीं वो हो सकता ही नहीं है ना जी, रेफरेंस नहीं है तो ऑर्डर कैसे होगा? देखिए ये तो अगर ट्रायल एक जज ने किया है तो और उसने डेथ सेंटेंस कर दिया तो द रेफरेंस कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड बी प्लेस बिफोर टू जजेस. तो रिडंडेंसी नहीं थोड़ी मुश्किल, उन्होंने किया नहीं, वी आर विथ यू टू दैट एक्सटेंट. तो खत्म होगी ना जी वो, तो हम कह रहे करना जरूरी था. वो भी आप फरमा रहे हैं कि वो ये हो ही नहीं सकता है इस केस में. मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब जैसे यहाँ तो there is an other interpretation which has been put forward by my Lord Chief Justice कि High Court at that particular time is acting as a court of session. Yes. So they are required to send a reference to another bench of the High Court. यही हम भी यही कह रहे हैं. ये होना चाहिए था ना, मतलब नहीं हुआ ना जी. यही दूसरा मैं ये कहता हूँ कि दूसरी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर हम 526 को 374 के साथ मिलाकर पढ़ें तो you can safely draw an inference that a case where sentence of death is provided cannot be transferred. Equal 374 in any case is far more important. मंजू साहब मेरे साथ थोड़ा सा ये कानून में लिख दिया जाता है एक्सेप्ट मर्डर केसेस,
जैसे आपने कहा दो एग्जाम्पल नहीं ऐसा नहीं तो सकता है हो सकता है सर, वो बस अब देखें ना जी, ये तो फिर आपने इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल पे चलना है ना, कि जब दो प्रोविजन है तो उसमें क्या करेंगे आप। ज्यादा ये तो मेरे ख्याल में सिंपल सी चीज है। मंजूर साहब, इसमें जरा सेक्शन 374 की जो लैंग्वेज है ना, हाँ, ये लिखा है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस सेंटेंस ऑफ दैट द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट। अब इसमें अगर हाई कोर्ट खुद डेथ सेंटेंस वो यही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो मैं बता रहा हूँ उस पर, वो साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर। और आपने कहा कि सब सेक्शन 3 के अंदर 526 में लिखा हुआ है कि वही प्रोसीजर फॉलो करेगी। तो इसके अंदर 2 में लिखा है। तो अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो सेंटेंस देंगे ये तो हाई कोर्ट में जानी है। अब हाई कोर्ट की कंफर्मेशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। नहीं, मैं तो ये नहीं, ये 5 to 6 कह रहा है, अपील का तो 5 to 6 जो कह रहा है सर, वो ये कह रहा है कि यूं समझा जाएगा कि विड्रॉ नहीं हुआ, सेशंस कोर्ट ही सुन रहा है। यस, ये है उसमें ये जो पॉइंट है 374 का, कि फिर हाई कोर्ट अगर ये किसी के मर्डर के डेथ सेंटेंस देती है किसी को, तो फिर उसका कंफर्मेशन का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर इम्प्लाइड तो लिखा हुआ है सर। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस वजह से ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसको एक अलग पहलू है कि हो ही नहीं सकता, वही है। और सेकंड ये है कि अगर आपने कर लिया है तो फिर आप रेफरेंस भेजें हाई कोर्ट को। इसमें आपसे पूछ रहा हूँ, केस 5 मेंबर बेंच हैज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी, तो आपके ख्याल में अगर रेफरेंस जाता भी तो इंट्रा कोर्ट अपील तो है ही नहीं, हाई कोर्ट में ही जाता, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था ना। बिल्कुल यही रेफरेंस तो बिल्कुल कहीं भी भेजें। अब वो तो इसमें अगर मेरे ख्याल में शायद कुछ हमें जवाब का हिंट मिलेगा अगर हम सेक्शन 375 भी देख लें। जी, क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट जस्ट अ रबर स्टैम्प बट इट कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। बट मैंने तो पहले बताया था जनाब को कि प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑनवर्ड। कंफर्मेशन इज जस्ट यस कंफर्म, नो कंफर्म, दे कैन डू अदर थिंग्स आल्सो। एविडेंस भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, भेज सकते हैं। बड़ा ये वो तो मैं पढ़ना चाहता नहीं, तो अच्छा इससे एक और बात उठती है। जी सर। एक तो है सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक, बट I may be wrong, but जहाँ तक मुझे पता है, whether it's a trial by 3rd class, 2nd class, 1st class magistrate, additional session judge, or whatever, they're always by a single judge. Yes, ये वही है point. तो ये 5 मेंबर बेंच क्योंकि वो कंट्रोल करना, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है। वो आर्गुमेंट भी प्लीज कंसीडर कीजिए, because there are other provisions in the CPC where conduct has to be recorded or something, unless there's some specific law which says this number of judges will be here. जैसे कि for instance treason case में 3 judges will hear it, तो वो तो अलग बात है, but normally does the CRPC envisage a trial by more than one? इसमें है कि कंफर्मेशन 2 जज करेंगे। हाँ, वो ठीक है। अच्छा सर, अब दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप इंडियन ज्यूरिसडिक्शन को देखिए, कितना बड़ा इंडिया है, तो वहां एक केस भी नहीं रिपोर्ट हुआ कि जो हाई कोर्ट में आया हो मर्डर का। क्यों? वो इसी वजह से नहीं आया कि ये चीज हो नहीं सकती। 2 प्रोविजंस है ना, वो स्पेशल लॉ पे आ जाएगा। वो जो प्रोविजन 374 की है, हाँ, हम कह रहे थे डिफरेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगते उधर। नहीं, मैं 2 केसेस जो दिए आपने वो शायद मार्शल लॉ का ताल्लुक नहीं था उनसे। बहरहाल नहीं, वो बहरहाल वो तो हुए कुछ नहीं जी उसमें तो, क्योंकि दोनों ने कहा वैसे था गौर अयूब साहब तो नहीं, उसमें तो बहस ही नहीं हुई ना इस पॉइंट पे। दोनों ने कहा कि ठीक है कर दो, उन्होंने कहा कर दो, फिर वापस चला गया। एक वापस चला गया, दूसरे में बरी हो गया। वो तो इश्यू नहीं आया ना जी। ये इश्यू तो कोर्ट को देखे, मुल्जम का काम नहीं है कि वो कोर्ट को हर चीज बताए। दिस इज ड्यूटी ऑन द कोर्ट। अब मर्डर रेफरेंस देखना ये कोर्ट का काम है, मुल्जम को नहीं पता हर बंदा। और फिर उस सिचुएशन को देखिए कि एक दिन एप्लीकेशन आ रही है, और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस अमीनुद्दीन कि हो सकता है ये 13 को ही आई हो, 13 को आई है ना, तो फिर वो 526 में 24 आवर्स सर वो मुल्जम का है, अगर वो मुल्जम देगा, अगर नहीं वो भी दे तो भी 24 घंटे से पहले नहीं होती। तो ये आप देखें ना कि, और उसकी मैंने वजह भी आपको बता दी, एंड राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस ये या कि वो अगर करते तो फिर उन 2 जजों को शामिल करना पड़ता। यही बात, वो नहीं कर सकते थे कि एक ने बेल दे दी। तो ये तो इतना ज्यादा, इसके लिए तो मुझे रोक रहा है मेरा ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसमें ये सिचुएशन लग रही है कि जब हाईकोर्ट ने ट्रायल अपने पास रख लिए
तो उन्होंने स्टेटस सेशन जज का ले लिया, बिल्कुल वही। और उसके बाद फिर 377 में लिखा है कि कंफर्मेशन 2 और मोर जजेस कर सकते हैं। बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहां भिजवाना चाहिए था, जो कि नहीं भिजवाया। नहीं, अगर इसका मतलब मजीद मैं जस्ट बात बढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 375, 376, 377, 378, 379, 381 have been made redundant. सारा कुछ रिडंडेंट कर दिया। तो ये सारा उन्होंने जो तरीकेकार दिया कि वो कम भी कर सकते हैं सजा। और फिर आप हेस्ट देखें ना, हेस्ट देखें कि जब आपके केस की फाउंडेशन ही गलत है, री इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन कहीं हो, कोई दिखा दे कि कंप्लेंट का क्या हुआ? सर वो कुछ भी नहीं हुआ ना जी, वो तो पड़ी रह गई, पता ही नहीं है, कंप्लेंट का रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया, वो पड़ी रह गई, उन्होंने उसको टच ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैरे में लिख दिया कि जी नहीं, वो नूर अलाई केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे, इसके फैक्ट्स डिफरेंट है, ये ट्रायल हो गया। ये नहीं कि उसका हुआ क्या, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ। ये बेसिक प्रिंसिपल था कि सुनता तो एक बेंच ना, जब एक कंप्लेंट चली गई 2 मेंबर बेंच के पास तो सुनना तो उनको चाहिए था, या अगर आपने 5 बना लिए थे तो 3 वो भी शामिल कर लेते, वो नहीं किए गए। तो ये तो बायस, और जो आप फैक्चुअल लीगल बायस की बात करती हैं, मैलिस की बात करती हैं, ये तो मैलिस से ऊपर चली गई बात, मैलिस तो रहा ही नहीं। ये तो टोटल एक बिल्कुल आपने एक तय करके काम कर लिया कि यार लाओ और ठीक है। अब आगे मैं जो आपको बताऊं, फिक्स्ड मैच नहीं, फिक्स्ड भी नहीं सर, पेनफुल वर्ड्स हैं। What word would you use? मैं मुझसे ना करवाएं, मेरे लिए फिर पंजाबी में मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर नहीं। ये बताएं कि कंप्लेंट तो फिर है ही नहीं ना रिकॉर्ड में, नहीं आपके पास नहीं है। We don't know what's the difference between the complaint and the FIR. नो, सिर्फ एक पैरा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो डिफरेंट चीज थी, उसमें मुलजिम और भी शामिल कर लिए गए थे, ये करके, इसलिए ये हाई कोर्ट का सही फैसला है कि ये कंफर्मेशन वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया नहीं, ये तो डिस्कस कहीं हुआ ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक कंफर्म पूछनी है कि सेंटेंस चली हो गई, सिलसिला हो गया, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो सकती, वो विदाउट कंफर्मेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम ये कहें कि एग्जीक्यूशन जो है वो एब्सोल्युटली इलीगल, बिल्कुल इलीगल, एवरी स्टेप वाज इलीगल। अभी तो आप आगे आएंगे, स्टेप छोड़िए, मैं अल्टीमेटली कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन वो तो बिल्कुल इलीगल है। सर एक चीज इलीगल नहीं है, यहाँ पे एक इलीगैलिटी नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट आउट करूंगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते। फर्ज करिए कि जिस कुछ भाइयों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जा सकता था, हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 जजेस का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस कंफर्म कर रहे हैं ना, बेसिकली 3 ने तो बरी किया है प्रैक्टिकली, तो 4 कैसे कंफर्म कर सकते थे 5 वाले को? नहीं कर सकते, 1 को तो 2 कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की फिर बेंच जो न्यूमेरिकल है वो टोटल स्ट्रेंथ पे तस्वर वो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4, फिर तो इस पे मैं तो यहीं तक कन्फाइन करूंगा। मेरी कंटेंशन तो यही है कि ये जो 2 प्रोविजन अगर आप पढ़ें तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अपील, उसमें मुल्ज़म का जिक्र ही कोई नहीं है। इस तरीके से चलाया जाता, जब एक स्पेशल लॉ था एंटी टेररिज्म का जिसमें ट्रायल हाई कोर्ट चलाती थी, उसमें तो कंफर्मेशन उसी हाई कोर्ट से होती थी। नहीं, वो कहाँ हाई कोर्ट ने कभी भी नहीं स्पेशल लॉ के तहत जो 90s में थे। नहीं सर, नहीं, कोई भी नहीं था। वो एक और वो सर वो थी स्पेशल कोर्ट, वो एक बनी थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट, 80s की बात है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। नहीं सर नहीं, वो और है, ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट आया था 75 का। नो सर, वो सप्रेशन है, ये 87 में आया था, कुछ साल 2 साल के लिए रहा था, फिर खत्म हो गया था। आगे बढ़े थोड़ा, आपने लाहौर भी जाना है? नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। आज ही जाएं, आज ही जाऊं, जैसे आप हुक्म करें। अच्छा सर, अब नाउ आई एम ड्राइंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल which the court was required to follow. It is start from 265. Have it? 265A. This is chapter 22A,
which was inserted in 1976. Before that, there were commitment proceedings, but this chapter was instituted. Now, sir, it starts with 265A is not so relevant. 265B B और C से शुरू होता है कि supply of statement in all cases instituted upon police in all cases instituted upon police report, copies of the following documents shall be supplied. So this is the first step when accused come to the court. So on the first date of hearing, copies are supplied. For framing of charge. Yes, so that they know, okay, what is the case against us, what is the evidence on the basis of which we are being tried or prosecution wants us. यही procedure High Court ने भी follow करना था 265B में. जी सर, अब आगे आप देखिए जो relevant section है वो है 265D. This is very important, sir. If after perusing the police report, or as the case may be, the complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, the court is of the opinion, this is very important, the court is of the opinion that there is a ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge. So the court is required, this is shall. कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म. इधर नहीं हुआ क्या? मैं सर थोड़ा मैं अभी आ रहा हूँ ना जी उस पे. मैं अभी आप उल्टा कर दें, पहले बताएं नहीं हुआ फिर नहीं हुआ. चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ. नहीं चार्ज फ्रेम हुआ. मैं थोड़ा ओपिनियन फॉर्म नहीं की. ये क्या सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले स्टेप पे आप कॉपियां देंगे मुझसे. जी वो तो पता है सर. नहीं अगली स्टेज का भी है ना. और विद इन 7 days 7 दिन के बाद आप चार्ज फ्रेम करेंगे. उससे पहले आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे. मटेरियल जो आपके पास हो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे ये FIR है, ये स्टेटमेंट्स है, ये रिपोर्ट है डॉक्टर की, ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट है. और हम समझ बकायदा एक ऑर्डर होता है. इन एवरी ट्रायल देयर इज एन ऑर्डर कि I have perused the record and I am of the opinion there are ground for proceeding. अब इस केस में क्या हुआ? Your Lordship kindly look at page 3 of volume 7. This is the first date of hearing. Volume 7 sir. वो जो पहला बेल ऑर्डर है ना ट्रांसफर का, उसके अगला पेज जो आप कह रहे थे कि शायद इस पिटीशन का ऑर्डर है. डायरेक्ट उन्होंने एविडेंस को समन कर लिया. यस अभी मैं पढ़ता हूँ. मैं पढ़ लिया था. आगे भी नहीं, अभी बड़ी बात मजेदार बात है. पेज सर 3 पेज 3 वॉल्यूम 7. अब ये पहला ऑर्डर है 24/9/77. इससे पीछे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि टू बी हर्ड ऑन 24/9/1977. पिछला देख लीजिए पेज जरा. जब ये ट्रांसफर किया तो उन्होंने कहा कि 24 को सुना जाएगा. तो ये फर्स्ट डेट हो गई. अब इसका देखिए इसमें पैरा 2 में जो है ना सर, पैरा 2 से पहले सर, दिस केस इज adjourned to the 2nd of October 1977 फॉर ट्रायल. अगला कहते हैं एविडेंस भी समन और उसके बाद कॉपी सप्लाई कर रहे हैं. इसलिए मैंने आपसे उस वक्त पूछा था ना कि चार्ज का फ्रेम. सर मैं इसीलिए मेरे साथ सीक्वेंस में मैं आ रहा था ताकि सारी बातें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड रिकॉर्ड है. मेरी डिफिकल्टी ये है और मैं चाहता हूं कि आप सब जो है ना मेरे साथ चलें, आपको पता चल जाए कि है क्या ये. वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए आ रही है, नहीं तो मेरे लिए कोई ये ऐसी बात नहीं है. अब आप देखिए इसको. अब ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है. Mandatory provision of law है that you have to form an opinion. This is the first date of hearing, and first sentence. Adjourn for trial and evidence be summoned. और ये उल्टी बात कर दी and then they supplied the copy. 265D को totally ignore कर दिया गया. और ये mandatory है. You have to form an opinion. Exactly. Am I clear, sir? Clear? Right. अच्छा, बड़े ये लोग पेश हुए थे. एम अनवर साहब पेश हुए. सर एम अनवर जो थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से. वही मैं कह रहा हूँ वो कुछ इसमें ये सारे लोग किसकी तरफ से हैं? सर ये आप जो ऊपर हैं एम अनवर, एजाज हुसैन बिटालवी, एम ए रहमान स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फॉर द स्टेट, जुल्फकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद. तरफ से कोई वकील नहीं था ही कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं. अभी आए ही नहीं ना, कोई वकील कहाँ से आएंगे? पहले दिन तो वो पेश हो रहे हैं.
अंदर को लिखा हुआ है कि अंदर हुआ है, कुछ साथ खड़े हैं बस। आप गुल पेश हुए। सर बड़ा कुछ हुआ अभी तो, अगर मैं पूरी ये आपको पूरी एविडेंस पढ़ूंगा तो 1 महीना लगेगा, मगर ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो शॉकिंग हैं, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ हैं, और वायलेशन भी नहीं है, वायलेशन से अगली चीज है ये आपको जो ये लग रहा है जैसे केस का ऑर्डर शीट पढ़ी जा रही है, ये सिविल केस की मैं ऑर्डर शीट पढ़ रहा हूँ, नॉट अ क्रिमिनल केस की। मतलब कुछ लग ऐसे रहा है जैसे कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, जैसे जरा आप देखिए ना वो चार्ज फ्रेम होना। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो अब मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि क्रिमिनल केस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रायल वर्क बड़ा जरूरी है। इसमें जो जजेस थे मालिक साहब आप जानते होंगे, जानता हूँ, ट्रायल कोर्ट के थे, कोई भी एक था गुलबाज साहब, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट, सेशन से आया जी, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट सर। मलिक साहब कैपिटल पनिशमेंट में तो वकील का होना भी जरूरी है, तो सर वो तो बाद में होना जरूरी है कि जब आप एक्चुअल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब मगर ये बड़ी मटेरियल डेट है कि आप एक पहली डेट पे बंदे आ रहे हैं, आप पहली ओपिनियन पहले दे रहे हैं, कॉपीज बाद में सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा? आपने तो राय पहले बना ली कि केस इज फिक्स। मलिक साहब ये पेज 10 के ऊपर ये जरा से इनसे पूछ लेते ना चार्ज के बारे में। पेज 11 के ऊपर ये 3/10/1977 का ऑर्डर है, पैराग्राफ 5, केस इज एडजर्न्ड टू 11 October 1977 फॉर ट्रायल, विटनेस शैल बी प्रोड्यूस ऑन द डेट फिक्स, 7 days एडजर्नमेंट हैज बीन गिवन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2। जी उसी दिन चार्ज अब आप 11/10 को देखे तो चार्ज 11/10 को फ्रेम हो। जी जी उसी दिन को हुआ है। चार्जेस read and explained to the accused, they pleaded not guilty. Very right, sir, but my respectful submission is that there is a procedure you have to follow which is for the court of session. That procedure says that first you will supply the copy, then you will form the opinion. And how can you form the opinion without perusing the record? You may need assistance of the counsel at that time. Even before filming of charge, before filming of charge, 265H की रोशनी में, it is a conviction by the court of sessions or the high court. ये कन्विक्शन तो सेशन कोर्ट की समझी जाएगी, यही बात है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, confirmation unless it is confirmed by the high court नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर। This is the first time this point has been raised, first time 374, and credit go to Justice Shah for writing such a beautiful judgment and highlighting the importance. मलिक साहब देखिए ये जो चार्ज फ्रेम करना है, जैसे आपने कहा कि ओपिनियन फॉर्म करने के, सपोज किसी और केस में अगर मटेरियल की बुनियाद पे एविडेंस इतना ना हो कि चार्ज फ्रेम किया जा सके, फिट हो जाएगा। 265 की पावर इस्तेमाल करते हैं। ये वेरी बड़ा जी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है जस्टिस मंदोखेल साहब ने। अच्छा ये आपके अपनी हद मंदोखेल साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने की पोजीशन में अपना आती है स्टेज पे, और वो कहते हैं कि द मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, व्हाट विल हैपन? So that in that situation court has the power to acquit the accused under section 265K कि जी हमारे पास ये मटेरियल ही नहीं है, हम आपको क्या चार्ज करें? किस पेज पे चार्ज? ये पेज 12 पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया था मिस्टर भुट्टो ने। जी जी पेज 12 पे सिर्फ लिखा हुआ है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय लीगल काउंसिल फॉर सिर्फ मेंशन है। चार्ज किस पेज पे मिलेगा? सर मिल गया, मैं आई वाज एड्रेसिंग पेज 12 क्वेरी, आप बता दो। वॉल्यूम 2 पेज 1 जी पेज 12 के ऊपर एक ऑब्जेक्शन ओवर रूल हुआ है विच वाज रेज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिस्टर। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन था, वो मेंशन नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Where is that charge? पेज कौन सा? पेज पता नहीं, पेज 1 है, वॉल्यूम 2 पेज 1। अब चार्ज भी उन्होंने हर एक का अलग कर दिया, एविडेंस चल गई है, अलग कर दिया चार्ज। पेज कौन से? ये जो जॉइंडर ऑफ ट्रायल है ना, उस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया कि अगर सारे मुल्ज़म है तो चार्ज आप इकट्ठा करेंगे, उन्होंने चार्ज भी अलग कर। हाँ ठीक, वो बताओ 49 पेज है इसका। हाँ, इससे अगला पॉइंट नोट करो जिसके बाद आना है।
क्या कर रहे हैं? सबमिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है द प्रेजुडिस, व्हाट प्रेजुडिस वाज कॉज्ड टू द अक्यूज्ड। तो अगर चार्ज, तो देखें वो आपकी बात ठीक थी कि नोटिस होना चाहिए था, वहाँ ठीक था। यहाँ पे ये कहना कि चार्ज उनने डिफरेंट कर लिया, उससे इसे चलो छोड़ दें, मैं इसको इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैं वही कहता हूँ आप उस चीज पे रखें जहाँ पे अक्यूज्ड को प्रेजुडिस। सर मैंने इसको जस्ट पॉइंट आउट किया, मैंने स्ट्रेस नहीं किया। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप इसकी बुनियाद, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो शॉकिंग है, वो बता रहा हूँ। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किया, वो बता नहीं, वो तो उल्ट कर दिया ना, आपने अपना प्रेजुडिस शो कर दिया कि आपने पहले रख लिया कि जी केस को एडजर्न करो फॉर एविडेंस फॉर ट्रायल। इसका मतलब है आपके दिमाग में पहले ये बैठा हुआ है, मुल्ज़िम आया है, ना उसका वकील है, ना आप कोई कागज देखे हैं, ना आपने कहीं लिखा है। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना जी कि ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। कोई जो एपीलेट कोर्ट के जजेस होते हैं दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल। जिंदगी में काफ़ी चीज़ें सिर्फ इंसान एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर सकता है, किताबें पढ़ के नहीं कर सकता। वो जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो सारे वेल वर्स्ड होते हैं ना कि ये स्टेज है, ये स्टेज है। अब जो फाइल जाती है हाई कोर्ट की कंफर्मेशन में, वो जो रीडर या अलमत भेजता है उसको नहीं पता ये क्यों, विजडम क्या है इसके पीछे, वो कहता है लिखा भेजो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये करना ही नहीं चाहिए केस, हाई कोर्ट का काम ये नहीं है। ये तो एक प्रोविजन रख दी गई है। इंडिया में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कोई केस ट्रांसफर हुआ? हमसे 5 गुना बड़ा है, कोई केस क्यों नहीं ट्रांसफर? अब आगे देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो उसका जवाब ब्रेक से पहले मिल चुका है। क्या वो माशाल्लाह नहीं थे। अच्छा, अब मैं जो ऑर्डर पढ़ने लगा हूँ, ये बड़ा बहुत ही ये भी एक पेनफुल ऑर्डर है कि क्या इस ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस साहब को ये केस सुनना चाहिए था? ये अब ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है कि जहां चीफ जस्टिस साहब मुल्ज़िम से नाराज हो गए हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं नाराज हूं, ये लिख रहे हैं मैं नाराज हूं, आपके साथ वकील की तलख कलामी हो जाती है और वो बात ख़त्म हो जाती है। मगर अगर आप पार्टी से उलझ जाएं या पार्टी के ख़िलाफ़ आप कोई प्रोसीडिंग की दरख्वास्त दे दें किसी को, तो क्या फिर आप जज रह सकते हैं? इसको बायस कहेंगे, प्रेजुडिस कहेंगे, क्या कहेंगे? अब मैं आपको पेज 49 इसी वॉल्यूम, यही है ना। एक सेकंड, आप आगे जाने से पहले जरा आपको एक सवाल पूछना था। सर हुक्म करें। 302 इज डिपेंडेंट ऑन द कंस्पिरेसी, करेक्ट? यस जी, इस केस में, यस। इफ कंस्पिरेसी गोज 302 collapses to the extent of conspirators, to the extent of Mr. Bhutto. Yes. Now please can you come to the first charge? Yes. And just read it. Where are the particulars in this charge? Sir, देखिए ना, accused is entitled. This is a case of conspiracy. Now please just read it. ये है जी that you sometimes in the middle of 1974 Where conspired, जरूरी था, मगर सर मैं यही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो ingredients देना in someone's house, in the prime minister house, in whereabouts. बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जनाब का हुक्म था। कंस्पिरेसी के कंपोनेंट्स तो डालेंगे। मैं वो आगे आऊंगा। जनाब का हुक्म था कि बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। I was just wondering. तो नहीं, ये है इस तरह तो सर हर ऑर्डर में ये मैं आपको बात दिखाऊंगा। फिर तो ये अनएंडिंग है। ये तो बातें मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूं कि मैं उन चीजों पे जा रहा हूं जिनका जवाब यहां बैठे किसी बंदे के पास नहीं है। मैं तो अगर ये तो बातें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब वो पढ़ें रेलेवेंट प्रोविजन, हाउ ए चार्ज टू बी फ्रेम, टाइम, प्लेस, सब कुछ आपने मेंशन करना है उसमें। 222 से आगे शुरू हो जाए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। समटाइम्स कौन सा टाइम था, कहाँ पे थे, क्या था, मगर मैं कहता हूँ उसको इग्नोर करें। जैसे वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाई मिस्टर जसैया कि जी वो ठीक है, चार्ज अगर उन्होंने उस तरह नहीं भी किया तो प्रेजुडिस को, वेरी राइट, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं, बट आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए उसकी अहमियत देख रहा हूँ बिकॉज इफ देयर आर सम केसेस वेयर यू कैन कन्विक्ट सेपरेटली, ठीक है, बट हियर मर्डर इज डिपेंडेंट ऑन कंस्पिरेसी, क्वाइट राइट, व्हिच इज नॉट जनरली द केस। मर्डर हो गया, ठीक है, वो अलग भी हो सकते हैं, तो अगर उसको खत्म करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे, मैं तो एग्री कर रहा हूं सर इससे।
میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات I'm just making a question, questioning you. 100% apt observation. Appreciated. اب سر میں پیج جی سر 49 پہ آپ جی 49 سر اب میں پڑھنے لگا ہوں. یہ 2 لائنیں اوپر میں چھوڑ رہا ہوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سب کے لیے. ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن آف وٹنس, یہ سر پیج 49 والیوم 7, پیج 49 والیوم 7. مل گیا سر جی. During the cross-examination of the witness, while describing the purpose for which the first stand gun had already been secured by Ghulam Mustafa, the witness stated that it has been obtained for the use against Chief Justice and has already been used against film actor Muhammad Ali. The witness later corrected by saying that by Chief Justice he meant retired Justice Sayyid Jamil Hussain Rizvi. اب آگے ریلیونٹ ہے. The acting Chief Justice, while pointing out to the witness, stated he should have said judge and not Chief Justice. Observe that the turn of Chief Justice had not yet come. At this stage, accused Z. Bhutto remarked from the seat, "Aega." The acting Chief Justice directed the officer in charge of the police station on escort duty to take note of it and have an entry made at the nearest police station. Ab aage, the acting Chief Justice further remarked, not that he was offended by the remarks, but if anything did happen, somebody would be accountable. تو اس کے بعد جج رہنا چاہیے. میں یہ کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آئی بات. میں سمجھا دیتا ہوں. جی. ہوا یہ کہ ایک وٹنس کا بیان ہوا, اس نے کہا جی کہ ایک اسٹینڈ گن مجھے پہلے بھی ملی تھی فار یوزنگ اٹ اگینسٹ دا چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس. تو انہوں نے بعد میں اس نے کہا سر وہ میں چیف جسٹس اگینسٹ کا کیا مطلب, مارنے کے لیے, اور کیا کرنا ہے اسٹینڈ گن سے. دوبارہ پڑھ لیں ذرا اس کی انگریزی کو چھوڑ دیں سر, سبسٹنس اس کا دیکھیں نا. پہلے PW31 دکھا دیں ہمیں. 31 کو پڑھنے کی سر ضرورت نہیں ہے, اس کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ کانٹیکس یہ ہے جی کہ ایک وٹنس آیا, اس 31 کو پڑھنا چاہیں گے پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. نہیں, میرا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیف جسٹس کو بھی قتل کر رہا تھا, محمد علی کو بھی کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے وٹنس نے کہا کہ مجھے اسٹینڈ گن میں نے پہلے لی تھی فار دا چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس. ایز اے گارڈ نو سر نو, وہ فار اس کو مارنے کے لیے. اور فلم ایکٹریس محمد علی. پھر وہ کہتا ہے کہ جناب حقیقت یہ ہے کہ میں نے کہنا تھا جسٹس جمیل حسین رضوی, تو میں چیف جسٹس کہہ گیا ہوں, اس کو کریکٹ کریں. تو ایکٹنگ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی چیف جسٹس کی باری نہیں آئی. تو بھٹو صاحب نے کہا وہ بھی آئے گا. بھٹو صاحب نے جب ایک ریمارکس آپ دیتے ہیں تو آگے سے میں نے بھی کچھ کہہ دیا. یہ جو غلام حسین ہے یہ اپروور ہے یا کیا ہے؟ نہیں, غلام حسین وہ وٹنس ہے, اپروور, جو سارے آپریشن کو کمانڈ کر رہا تھا. تو نہ صرف انہوں نے اس کنسپیریسی میں تھے بٹ ایک ارلیئر کنسپیریسی میں بھی تھے کہ ایکٹر محمد علی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی ٹاسک ملا تھا. نہیں تو یہ تو بہت کریڈیبلٹی ٹو دی وٹنس پہ چلی جائے گی سر. اب اس پہ چلے جائیں گے, وہ تو دوسری سائڈ پہ ہے. ابھی پہلے محمد علی کا ان سے کیا تعلق ہوا سر؟ وہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے نا, اپنی ایکٹیویٹیز بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا گیا, اس کے علاوہ بھی وجہ یہ تو اس سے پوچھی جائے گی. کچھ اس کے مین اسٹیٹ وہ بتا رہے ہیں نا, ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس دور میں یہ کام ہو رہے تھے, اور یہ جو ضروری نہیں کہ یہ جو اکیلا ان کے ساتھ ہوا, دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. نہیں دیکھیے پھر سوری آئی ایم بلیورنگ دا پوائنٹ. پھر یا تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اپروور وٹنس کہ آئی واز دا ہٹ مین ٹو ڈو ویریس تھنگز whoever would speak against this gentleman, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کی تھی تو اس کو بھی ماننا تھا, محمد علی نے بات کی. لاجک کیا ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ مجھے ایکسٹینڈ گن ملی تھی چیف جسٹس کے اگینسٹ لگانے کے لیے.
بجائے جج کے نام چیف جسٹس کا نام لینے کے لیے لفظ چیف جسٹس کہہ دیا. چیف جسٹس گاٹ offended. وہ تو میں سمجھ گیا. بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا آئے گا. مگر میں دوسرا پہلو وہ تو بات سمجھ گیا. اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا, اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اور دوسرا کہتا ہے میں offended ہوں. offended ہوں, اور اگر ہوا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں جب جج کا ملزم کے ساتھ پرسنل گرج ہو جائے اور جج اس کو چاہے کہ سزا ملنی چاہیے تو کیا وہ جج رہے گا؟ یہ ہے میرا پوائنٹ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. اگر آپ پیج 50 پہ آ جائیں, ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پیج 50 پہ دیکھیں, سائن سب کر رہے ہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں. نہیں, اگر اوپر دیکھیے, the acting chief justice directed. He doesn't say the court directed. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ بات پتہ نہیں اب یہ بھی میں تو مطلب if it's a collective court تو then you write unless there's a dissent or something. صاحب اس کو تھوڑا الاؤنس دیجئے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انگریزی میں ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب وہ تو چلے اس کو اتنا امپورٹنٹ. پی ڈبلیو کون سا نمبر تھا؟ 31. آپ کنسرن کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کی 30 انگریزی بہتر ہے؟ 31. اچھا چلے, اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سر, پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باعث دکھا رہے ہیں. یہ باعث ہے غصہ کر گیا اس کو آپس میں ان کی یہ. ہر آپ اس کو ایکیوز بنا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف پرچہ کروانا, یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کمپلیننٹ بن گئے, کمپلیننٹ بن گئے نئے کیس کے لیے. اور جج یہ کمپلیننٹ بن جائے تو کیا پھر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اس ٹرائل میں؟ کوشچن یہ ہے. اور کیا باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر سائن کیا؟ یہ پوائنٹ ہے. یہ جو باعث میلس ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام سے رپورٹ درج کراؤ, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اس کا مطلب میں دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو پکڑ لینا. یہ 107 اور 151 کی کاروائی کرنا چاہتا ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے, اس میں دونوں کہا کہ اپریہنشن کر دی کہ یہ مجھے مروا دے گا, میڈیکل ہو گیا نا. تو سر آپ کا اس کا مطلب ہے جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ملے, میری خواہش ہے اس کو سزا ملے کسی اور کیس میں, تو اگر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کی فیٹ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے ملک صاحب کہ جو اگر ملزم نے کوئی بات کر بھی دی وہ تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے اس آرڈر میں, یا تو پھر اس کو پھر بیان بلائیں. نہیں, پہلے تو آپ نے کہا نا یہ سٹارٹ چیف صاحب نے لیا, ٹانٹ انہوں نے کی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی. یہ وہ کس کو سنا رہے تھے؟ یہ بات وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہاں کون تھا جو باری لا رہا تھا؟ یہ باری تو ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو اب جیسے آپ مجھے کچھ کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں تو آپ کہیں ہاں جی آپ نے تو کنٹیمپٹ کر لیا, بس ٹھیک ہے, ہم نے جو کہا وہ چھوڑ دیں. آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف کی باری نہیں آئی. What do you mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. وہ آگے سے اس نے کہا آئے گا, اب کہہ دیا ہوگا. اب اس کے اوپر پورا آرڈر لکھوانا کہ اسکارٹ والے کو کہو کہ تھانے جاؤ, رپورٹ درج کراؤ, تاکہ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کل کو. ملک صاحب ہوا کہ ویسی آرڈر کر دیا تھا کیا جی؟ یہ رپورٹ کر دی تھی جج صاحب نے جی, وہ آرڈر میں لکھی ہے چیف جسٹس آپ ابھی آرڈر پاس کریں کہ بھی ان کو لے جاؤں, تو یہ تو لے جائیں گے مجھے. یہ پوچھنے اس میں کوئی دوسرا جو رائے نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو میری وجہ سے کبھی نہیں ہوتا ایسی بات. نہیں چلے, میں تو ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں. ابھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے, آپ تو خود چیف جسٹس رہی ہیں. اب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کاروائی کرو. Who will dare? And in that time, at that time when there is a marshal, has not been brought on the record کہ واقعی ہو گیا تھا. نہیں, وہ تو obviously ہو گیا ہوگا, وہ اس کی جرت ہے, وہ جو بیچارہ سب انسپیکٹر ہے کہ وہ کمپلائی نہ کرے. آپ اس میں بات نوٹ کریں نا کہ کتنا پرسنل میرے اندر وینم ہے. آگے بڑھتے وہ ہو یا نہ ہو, لیکن آرڈر سے پرسنل گرج سامنے نظر آ رہی, ثابت ہے, اسٹیبلش ہے, نظر نہیں آ رہا, اسٹیبلش ہو گیا. اس کو آپ اس اینگل سے بھی دے سکتے ہیں ملک صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا تو بالکل پرچہ, تو یہ اس پہ بن سکتے تھے کیس 100%. چلے پہلی ہو گئی اس کو. لیکن افسوس یہ کہ پائلٹ کہتے ہیں 5 سے پہلے ہو گئے, موقع آگے کیا. اچھا سر, اب میں اگر اس اسٹیج پہ آپ کو وہ ٹریبیونل کی بات بتا دوں
जिसमें वो कसूरी साहब का स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल ने रेफर किया है, ये so I am not addressing you, please. नहीं आप हमें बताएं ना, आप कोर्ट से बात कीजिए, मैं रिकॉर्ड से आप हमसे बात करें, तहम्मुल रखिए. I have nothing personal against you, Kusuri Saab. You are respectable for me. I am referring the record. I don't say. हमें मुखालिफ सर मगर अच्छा नहीं लगता. नहीं अब क्या करें, बुजुर्ग हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, आपको नहीं सुने हम क्या. पहले ये बता दें ट्रिब्यूनल बना कैसे और क्या हुआ. सर अब मैं पहले एक तरफ से फारग हो जाऊं तो फिर बता देता हूँ. ये ट्रिब्यूनल सर इस तरह बना कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया अंडर द ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत. वन मैन ट्रिब्यूनल था. ये नोटिफाइड हुआ इन गैजेट ऑफ पंजाब ऑन 11th of December 1974. इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है, उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली. इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके, अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता हूं. वो मैंने पढ़ ली है पूरी रिपोर्ट, रिकॉर्ड का हिस्सा है. रिकॉर्ड का हिस्सा है. उसका पेज कौन सा है? 14 पे सर, जिसमें ये लिखा है, ये है पेज 14 है इसका. वो कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं सर, एक ही इतनी सी रिपोर्ट है. क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर पर्सन्स हु मे बी इन्वॉल्व्ड, कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे. नहीं, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है. आप वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा. मैंने देखी हुई, क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं सर? मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इजाजत दें. इसको पढ़ लेना. जी पढ़ें जी प्लीज. मैं पढ़ देता हूँ, चलें आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी. कौन से ये सर पेज 14 पैरा 15. कॉपी भी है, कॉपी है या नहीं हमारे पास? और ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने. है किसमें? मैं सर बताता हूँ. ये पढ़ी, ये है ओरिजिनल तो हमारे पास है, पता नहीं कॉपीज बनी है या नहीं. कौन सा आप ऐसा करें, आप पढ़ लें, हमारे पास ओरिजिनल, हम कॉपीज कर लेंगे बाद में. आप पेज 22 February 1975. पेज पेंसिल से लिखा हुआ है सर जी. वही टाइप पेज है ना जी. ये 14 है, टाइप पेज 14 उसके नीचे पार्ट 2 लिखा हुआ है. रिपोर्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल. नहीं, इसमें तो हमारे पास नहीं है जी. पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ 15 सर. ये जो अब ये देखें, ओनली मोटिव वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई और आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्रिब्यूनल ने जी. उसने तो आगे जाके उनको गाइडेंस दी है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन. एडिशनल फैक्ट फाइंडिंग मशीन है. हाँ उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. Why should there be a tribunal? वो मैं उस पे तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें जो कि इस केस के लिए बड़ी जरूरी है. वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, नॉट बाय दीज ट्राइब्यूनल. बिल्कुल, आई एम विद यू सर कि कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्राइब्यूनल बनाने की. वो तो एलिगेशन है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें. बिल्कुल ठीक, मगर एक सर्कमस्टांस आ गया ना उसमें. मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक ऑर्डर. आई थिंक अगर हम उसका सिनारियो देखें, एट दैट पॉइंट इन टाइम Mr. Bhutto was the Prime Minister and allegations were being made, so probably to raise the stakes or whatever you want to call it, a judge of the High Court was constituted as a tribunal कि कहीं ये देखें पुलिस तो नहीं करेगी सही इन्वेस्टिगेशन, तो शायद ये वजह हो सकती है और मेरे ख्याल में यही वजह होगी. मलिक साहब, इस तरह के ट्राइब्यूनल बने जब आप इशू को पार करना चाहें तो फिर ऐसे तो होते हैं. सच दोनों तरफ जाती है ना बात. बट द पॉइंट ऑफ माय लॉर्ड यहिया अफरीदी इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज इन क्रिमिनल केस इट इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन. मगर बन गया ना. मैं तो इसलिए रेफर कर रहा हूँ ना. जी बताएं फिर. पढ़ेगा इन explaining the mention of motive in the FIR. अब ये आगे बड़ा जरूरी है. The complainant made it clear, and who is the complainant? Made it clear that it does not necessarily mean that he was subjected to this
and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister, or that the attack was organized by someone in government or party. He said, on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister, who happened to be, for the time being, the repository and source of all political and governmental power, could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene. अब ये वो जो बात है कि वो उनका नाम आया तो क्या वही थे. अब वो ट्रिब्यूनल रेफर कर रहा है उनकी स्टेटमेंट को. दिस इज हिज केस, ही डिड नॉट अपीयर. आई डोंट नो वेदर ही अपीयर और नॉट, बट दिस इज इन द रिपोर्ट. वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट बताई है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो हों, कोई उनकी बातें सुन के शायद किसी और ने भी कर दिया हो. ये मैं पढ़ना चाहता. ठीक. अच्छा, ये हो गया. अब क्या नहीं, अभी ये जो ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट है ये 75 की बेटा अभी नहीं. जी सर, ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट है, हाँ, इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ये दिए थे. उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ? अब पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है. अब उसका मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा था ये लाइनों पे करो. अब ये तो जिन्होंने चालान देना था, रिपोर्ट देनी थी, विटनेसेस देने थे, उनका काम था ना. ये ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई? हाँ, वहाँ आई ये. तो इनके बयान से कन्फ्रंट नहीं करवाएंगे? नहीं, वो उन्होंने इजाजत नहीं दी क्योंकि बयान तो पता नहीं आया. बहरहाल वो तो बड़ी सर लंबी. अभी मैं तो सिर्फ एक गवाह को टच करूंगा. मैं आपका टाइम बचाऊंगा. देयर आर 41 विटनेसेस. मैं नहीं चाहता फिर वो बड़ा लंबा हो जाएगा. 41 की नहीं, सिर्फ कंप्लेंट के चूंकि स्टेटमेंट आ गया, वो कन्फ्रंट होना चाहिए था. सर वो आना चाहिए था. वहां कन्फ्रंटेशन को परमिट ही नहीं किया गया. उन्होंने, अब आप देखेंगे वहां पे वो, अब इतनी बातें हैं ना जी, इतना ज्यादा है मटेरियल कि वो टाइम का इशू आ रहा है आपके पास. अब 41 विटनेसेस है. मैं सिर्फ एक गवाह को फोकस करूंगा, बाकी आई विल नॉट गो टू अदर एविडेंस. सो अब सब हम आ जाएं इस पे. एविडेंस ऑफ मसूद महमूद, PW, ही इज PW2. मसूद महमूद PW2 सर. कौन सा वॉल्यूम है? अभी मैं उसको पढ़ नहीं रहा जी. मैं अभी जरा थोड़ा सा वॉल्यूम नोट कर लूं. वॉल्यूम 2 है. वॉल्यूम 2 है इसका. जरा स्टोरी अधूरी रह जाएगी. ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, because my colleagues don't have the benefit of this report. ये वाला डायरेक्शन वाला 36. हाँ. In short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following: a more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence, that is resident of the area, invitees at the house of Bashir Shah, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation, particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapon used, and the suspect. And the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case, and the suspect to be fully protected against physical harm. मैं पूछना चाहूँ, जो 41 विटनेसेस थे, कार के ऑक्यूपेंट्स थे? कार के ऑक्यूपेंट में स्वाय कसूरी साहब के बाकी कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया. अच्छा, ये दूसरे जो थे इनवाइटीज एट द हाउस ऑफ बशीर शाह? नो. अच्छा, the other thing was the how many shots were fired at the car? Nobody knows, sir. नहीं, कार में उन्होंने कहा छन्नी हो गई. वो काफी उनसे एम्प्टीज ली थी उन्होंने स्पॉट से. नो, आमतौर पे तो केस प्रॉपर्टी बन जाती है. वो बनी ना, ये एम्प्टीज बनी केस प्रॉपर्टी.
कार نہیں کار کو تو اس میں کتنے جیسے انہوں نے کہا نا کہ there was one entry اگلے دن انہوں نے سپرداری پہ لے لیا. نہیں اس میں کتنے نشان تھے؟ اب یہ تو انہوں نے نمبر آف ریکارڈ میں کچھ آیا کہ وہ جو جس نے اس کو ایگزامن کیا تھا اس کی فوٹوگراف لی تھی وہ بات آئی. بٹ سر نہیں مطلب میرا مطلب ون شاٹ ہے یا موت؟ نہیں کافی ہیں وہ ملک صاحب شاید آپ بتا چکے ہو, شاید میں نے مس کیا ہو, ایک کمپلینٹ آئی ہے کمپلیننٹ کی طرف سے, تو پھر جو انویسٹیگیشن وہ ایٹ دا ٹائم اینڈ دی اکرنس ٹک پلیس, پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور رخ مڑ گیا مسٹر بھٹو کی طرف. اس دوران کیا ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی چارجنگ مسٹر بھٹو فار دی مرڈر آف ہز فادر؟ کہاں کمپلینٹ میں یا اس کیس میں؟ نہیں اس کیس میں کمپلیننٹ کی پھر بعد میں انویسٹیگیشن جو شروع ہوئی اور وہ انویسٹیگیشن کا رخ جو تھا وہ مسٹر بھٹو کی طرف مڑ گیا. یہ 77 کی بات کر رہے ہیں. جی تو اس دوران ان کی کوئی ہاں آئی ہے, ان کا تو کورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کورٹ سے پہلے نہیں کورٹ سے پہلے انویسٹیگیشن میں ڈیفینیٹ آئی ہو. کمپلینٹ فائل کی وہ بتا رہے ہیں جب وہ کمپلینٹ فائل کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو دی, نہیں وہ میرے علم میں اس پہ ایف آئی آر میں تو نہیں ہے نا, ذکر تو ہے بھٹو کو. ان کا کیس کورٹ میں بھی یہی ہے کہ یہ انہوں نے پورا نریٹ کیا ہے کس طرح میں نے پارٹی جوائن کی, کس طرح میں نے مخالفت کی, کیا کیا گراؤنڈ تھی میری مخالفت کی. میں ان کے فیصلے کے خلاف ایسٹ پاکستان اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے چلا گیا. اگر واپس میں پھر واپس بھی پیپلز پارٹی چلے گئے؟ بڑا کچھ باتیں ہیں, بالکل چلے گئے, بالکل چلے گئے. انہوں نے ٹکٹ مانگا 77 میں پیپلز پارٹی کا, ٹکٹ ڈینائیڈ ہوا. انہوں نے باہر کے ملکوں میں گئے, وہاں باتیں کی, وہاں بھٹو صاحب کی تعریف کی. یہ ریکارڈ کی باتیں آپ کہتے ہیں پڑھ دیتے. کرمنل کمپلینٹ نے کس تاریخ کو فائل کی؟ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ جو آرڈر آپ نے پڑھا اس میں لکھا ہے اگست میں شاید کی ہے. آف وچ ایئر؟ 77 جب ماشاء اللہ لگ گیا. وہ تو پھر آپ ان کا میری سبمیشن یہ ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کے لیے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اسٹیٹ زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا تھا نہیں کمپلیننٹ سے زیادہ. چلیں جیسے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, میں اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا, میں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا. چلیے آگے چلیں کیونکہ وہ بڑا لمبا ہے. وہ جو باتیں موٹی موٹی آپ نے پوچھی ہیں کہ ہی ری جوائن دا پارٹی, ہی اپلائڈ فار دا ٹکٹ, ہی ہیز ایڈمٹڈ دس فیکٹ. He admitted this fact in cross-examination. That's applied. But he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. یہ ان کی explanation ہے. But یہ fact admitted. But میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں جو سبمٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ there was only one witness against Bhutto. One witness, and that is Masood Mahmood. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over. Because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. اب میں یہ دینا بھی اس کی ٹیسٹیمنی دے دوں. پیج کون سا ہے؟ اب میں اس کے بڑے ہی تھوڑے تھوڑے پورشن پڑھوں گا تاکہ جناب کا ٹائم بچ جائے, کیونکہ یہ جو کراس ایگزامن چیف ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹلی آئی ول کنفائن مائی سیلف ٹو دا ایگزامینیشن آف چیف اونلی. I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages. But I will read just 10 pages.
G. And thereafter I will make Page volume 2. Volume 2, page And thereafter? 64. Thereafter, sir? आपने कहा and thereafter I will, after reading this? After reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross-examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is कौन सा पेज चले? page 64. Malik Sahab, he was also executed. नहीं, he was a prover, madam, he was a prover. Prover भी तो उसमें execute हुए. नहीं, अप्रूवर को तो माफी मिलती है तो वो बयान देता है ना जी, उसको तो बस execute हुए हैं prover. नहीं, इस केस में तो कोई अप्रूवर एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अप्रूवर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैम बिकॉज यू हैव टू ग्रांट हिम पार्डन. तो बड़ा मेजर हाँ, चूंकि लॉ को अप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैंने पूछा. बाद में उनको भी कर देते हैं, काम निकालने के बाद उनको भी कर देते हैं. नहीं, वो बड़ा क्लेवर था, उसने दोनों तरफ खेला है. वेरी क्लेवर मैन ही इज. ये मैं कुछ जाती राय नहीं दे रहा, मैं तो उनको देखा भी नहीं. जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेज बताए, करूँ शुरू सर? पेज 64. PW2 Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on essay. Essay is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें. मुझे नहीं पता सर. I joined the police service. ये skip करें. क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये skip नहीं होगा. अच्छा. ये ओहो आपने चले फिर पढ़ी मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ. इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूँगा. एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई, और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का. तो फिर मैं कहूँगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है. प्रूडेंट मैन मानेगा. आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना. अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे. ये इसलिए बड़ा जरूरी है ये स्किप, ये इसको मैं पढ़ूंगा. I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the police training college in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was additional superintendent of police, West. I served as superintendent of police and later as deputy inspector general. In 1965, I was selected as deputy secretary central with headquarters at Ankara. Before that, I had served as a deputy secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defence, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Waqar Ahmed, the Establishment Secretary, during those days. I was promoted as Additional Secretary and then transferred to a punishment post, that is Managing Director, Board of Trustee of the Group Insurance and Benevolent Funds in the Establishment Division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Waqar Ahmed to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call on Mr. Waqar Ahmed before this interview. Mr. Waqar Ahmed was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me, which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Waqar Ahmed's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at a time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister
and Mr. Waqar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity and capacity to hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into deterrent one. The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmed did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up of an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ, I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ, अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothes men, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to the presence to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ, next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmed Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfikar Ali Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mia Abbas, वो जो ऊपर नाम आया ना, already been given directions. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Muhammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा, मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट
کی باتیں ہیں. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں چیف پہ بہت کم جاؤں گا, صرف 2-3 اس کے پیرے پڑھوں گا. میں اس سے ہی آپ کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایویڈنس ریلائبل نہیں ہے. دس از مائی ٹاسک. To get rid of Mr. Ahmed Raza Kasuri, the Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Muhammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mr. Ahmed Raza Kasuri or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ye bada important hai, I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. Yahan main pause karta hu. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience but against the dictates of God. Now if your lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir? میں تو چاہتا تھا کہ میں ذرا ڈیٹیل پڑھ کے اس پہ بات کروں, مگر ابھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں. میں دیکھ ہی رہا تھا. میں کیا کروں؟ ملٹی ٹاسک. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک اس کو بتا رہے ہیں, انفارم کرنا ہے کہ یہ میں طے کر چکا ہوں. اور وہ آگے میں بتاؤں گا نا کہ اگر اس کو بتانا ہی مقصود تھا کہ کام کر دو تو پھر اس کو نہیں, اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کنسپریسی کی بیسک چیز تو سیکریسی ہے کہ میں ایک بات دوسرے کو نہیں بتانا چاہتا. یہ بتائیں, یہ جو اپنے میاں محمد عباس صاحب تھے, ان نے کنفیشن کیا تھا؟ کنفیشن کیا, ریٹریکٹ کیا. ان نے جو کنفیشن کیا تھا اس میں ان نے کیا فرمایا؟ اس میں نے یہی فرمایا کہ جی ہاں جی یہ ٹھیک ہے, یہ سازش ہوئی تھی, مجھے اس نے بھی کہا تھا. اس نے کہا تھا مسعود محمود نے بھی کہا تھا, پہلے نے بھی کہا تھا, پہلے بھی نہیں کہا تھا, مگر وہ ریٹریکٹ کر گیا. اس کا کنفیشن ہائی کورٹ نے بھی یوز نہیں کیا اگینسٹ بھٹو, سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا. سپریم کورٹ میں پھر اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ نہیں جی وہ میں ریٹریکٹ غلط کیا تھا, میں صحیح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. دس آئی ایم ریفرنگ فرام میجورٹی ججمنٹ. Majority judgment. His statement was not considered. My question is, I'm stopping here. Just what was my purpose to involve this man? اب آگے پڑھیں گے تو اور باتیں آئیں گی. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas. So it could be conveyed to somebody else. It could directly be called by the Prime Minister. کہ بھی کیا کیا. اب آگے دیکھیں گے تو اور باتیں آئیں گی. پڑھوں سر فردر. آگے جی. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Muhammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, you don't want Bakar chasing you again, do you? I returned to my office in that perplexed state of mind. اب یہ بڑا important ہے کہ the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said yes sir. حکم کی تعمیل ہوگی جو ہمارے سبارڈینیٹ آفیسر ایون جوڈیشری میں ہر جگہ کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا no sir, I can't do this. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. یہ وقار احمد کون تھے؟ وقار احمد اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری تھے, but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں behind his back. پتہ نہیں جی, سارے ہی کرتے ہیں behind back پہ ہی تو باتیں ہوتی ہیں, فرنٹ پہ تو بہت نہیں. یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیسٹمنی. ہاں یہ صحیح ہے بات. نہیں بھائی, if he is attributing things, you should have been summoned. میں پھر ریپیٹڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں تو ٹائم کانشیس ہوں. اتنا انٹرسٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اتنے انٹرسٹنگ اس میں پوائنٹ ہیں, نہ کہ فیکٹس کے بلکہ لا کے. میں تو چاہتا ہوں سنیں اس کو. یہ ابھی تو میں ادھر رکا ہوں نا کہ صرف اس سے ہی دیکھ لیں
کہ کیا اس کی ضرورت تھی بلانے کی. اب آگے بڑی مزیدار باتیں آئیں گی, ابھی آپ اس کو دیکھیے. بڑا یہ اب ایک سٹیج پہ یہ بالکل مومن بنے گا, یہ کہے گا کہ I have unflinching faith in God. اب unflinching faith جس بندے کا اللہ کے پاس اللہ میں ہے تو کیا وہ بدلتا رہتا ہے؟ جی 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 ٹھیک, کنٹینیو کروں. جی 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 جی. اچھا, whenever you're tired we'll stop. سر it all depends on you. ابھی میرا اس میں 1.5 نہیں آپ چلیں چلیں آپ کا کتنا ٹائم ہو؟ سر ابھی کوئی گھنٹہ 1.5 اور لگے گا, زیادہ لگ جائے گا. تو اس میں کیونکہ بڑی سر یہ بڑا امپورٹنٹ وٹنس ہے. آپ بتائیں 1.5 گھنٹہ لگنا. کنٹینیو. ہاں ٹائم لگے گا سر اس میں. گھنٹہ لگان کے موقع جو. اچھا ٹھیک. جی چلیں تھوڑا لیٹس ایک کی وٹنس تو ختم کریں. یہ تو نہیں ختم ہونی سر. اس کا چیف ختم ہو جائے گا. چلیں لیٹس سی. چیف ختم ہو جاتا ہے. یہ اگر گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں تو ملک صاحب 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے پورا اس کو ایگزامن کرنا ہے. دیکھیں I know it's very difficult to predict time but let's make some progress. ابھی تو ٹائم ہے تھوڑا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں, چیف پڑھ لیتے ہیں پھر بات کریں. چیف پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ پھر باقی باتیں بڑی لمبی ہیں, اس کے لیے ٹائم چاہیے. یہ سر اب آگے آ گیا. میاں عباس, I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. He is repeating the order. He is repeating the order. He is not giving him a direction. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فلاں نے یہ کہا ہے. یہ پہلے پرائم منسٹر میاں عباس کو کہتے ہیں قتل کرو, پھر اس کو بلا کے کہتے ہیں پرائم منسٹر کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں پرائم منسٹر دنیا بھر کو بتا رہے ہیں سر. نہیں کیا مطلب ہے سر, اب مجھے تو مطلب نہیں پتا, یہ تو کیس ہے آپ کے سامنے. میں تو اس کیس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر نے بلایا, مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہ I want to get rid of Mr. قصوری, اللہ ان کو زندگی دے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے کہا, اور یہ ٹاسک آلریڈی ہیز بین اسائنڈ ٹو میاں محمد عباس تھرو یور پریڈیسیسر. یہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. اب انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ اس کام کو کرے. آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے کانشیس کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو میں نہیں کر سکتا. تو پرائم منسٹر اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو لیٹ یور کاز کیپ آن چیزنگ یو. اب وقار کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ ہے وہ کچھ نہیں پتا. یہ کہتے ہیں میں اسی پرپلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے دفتر آیا ہوں, اس کو میں نے بلایا, میں نے وربیٹم ریپیٹ کر دی, اینڈ That's all. اپنے طور سے کچھ نہیں کرا. وہ تو آگے آئے گا نا, جو پوچھا ہوا ہے وہ بڑی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ابھی تو اس کو آج پڑھ لیتے ہیں نا جی, باقی پھر دیکھ لیں گے. وہ کہتا ہے میرا ایک جو دیکھیں یہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے سر. نہیں بہت فائدہ ہے سر, پلیز. دیکھیں میں پتہ نہیں مگر مجھے دیکھیے میری ایک ریکویسٹ. نہیں میں آپ کو بتا دوں, میں نے میڈ دس کمنٹ. A person becomes party to an illegal act for joint benefit, mutual benefit, that could be one thing, or to aspire to an office, that could be another thing, but he's already got the office, or he can decline the office. There's nothing blackmailing. Prime Minister کو کیا کریں گے, نوکری سے نکال سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں سر, میں گزارش کرتا ہوں, اب یہ فیصلہ کرنا ہے. نہیں میرا مطلب وہ پرائم منسٹر بھی نہیں ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وقار احمد تم ول بی ویری. دیکھیں میری گزارش پھر یہ ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ڈیوٹی اسائن کی ہے. نہیں چلیں کریں. میں کہتا ہوں سب کو سمجھ آ جائے. چلیں کریں. میرا ٹارگٹ یہ ہے, میرا پرپز یہ ہے. ٹھیک ہاں, یہ میرا مقصد ہے. سوری فار دی انٹرپشن. نو نتھنگ سر, میں آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. آگے جی سنیے. I returned to my office in this perplexed state of mind and called Mia Abbas. I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. I was surprised to find that Mia Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed, because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once.
Mia Muhammad Abbas was director operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmed and through his assistant Bajwa. कैसी interesting बात. बाजवा भी आ गए, बाजवा भी आ गया, सईद भी आ गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और फिर भी साहब ने दोबारा को रिमाइंड कर रहे हैं प्लीज कर दो, कर दो, और वो एक्सेस पे नहीं है ना. आपने एक काम जिससे करवाना वो तो बाहर बैठा हुआ है और बाहर राब्ता ही नहीं का है, वो उधर ही है, उसको बुला लेते. अब आगे देखिए सर. In August 1974, Mr. Ahmed Raza Kasuri was sniped at in Islamabad before the Islamabad incident, and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmed Raza Kasuri, who was likely to be Quetta. अब ये कोयटे का इंसिडेंट है क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कोयटा में शायद अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात फिर इसका तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है. अब मैं आप सही समझे हैं जी, आप सही समझे. अच्छा इसके बारे में क्वेटा के बारे में अब पेज 74 पे जनाब. On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, "Your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmed Raza Kasuri, he has got his father killed." I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है, तो उसने कहा कि मियाँ अब्बास ने ये क्या किया है. आगे कहते हैं, the Prime Minister hung up after telling me that he would summon me later. His ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan, where I was ushered into the presence of Mr. Bhutto, who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him. Most nonchalantly, Mr. Bhutto said to me, as if he has not talked with me before, "I heard Mr. Ahmed Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in Lahore." I replied that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Abbas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, "This is very important, sir. Kindly look at a man." He said to me, "At your behest," I said to him, "At your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore." ये इनके प्रीडिसेसर कौन थे? वाना साहब थे जी. कोई वो पेश हुए? वो फौत हो गए थे. नहीं, इसमें मेरे ख्याल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से दौरान या पहले फौत हो चुके थे, वो रिकॉर्ड पे आ गया. अब देखिए बंदे का किरदार कैसा है. एक तरफ कहता है जी सुन के तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मगर मैंने कन्वे कर दिया. दूसरी तरफ कहता है कि नहीं. अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अगला जी, वो असली बात आपने नहीं पढ़ी. वो पढ़ देता हूँ जनाब. पढ़ दीजिए. पढ़ देता. My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmed Raza Kasuri's father were great friends. I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore. We, the two families, had excellent relation. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmad Khan or Mr. Ahmed Raza Kasuri or any member of that family never existed. नहीं, अगर इन बात मान लेते हैं दोस्ती थी, तो बुनियादी फर्ज था दोस्त का कि जाके फौरन इतला देता.
کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یہاں سے غائب ہو جاؤ، چھپ جاؤ، کچھ کر لو، جان بچا لو. یہ تو کہنے میں بہت دوست تھا ان کا. میں تو ابھی تبصرہ کر نہیں رہا، میں تو نہیں، میں سوچ رہا ہوں یا تو کہ میں دوست نہیں تھا. بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. اور یہ بات چلیں پرائم منسٹر کو نہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست کو تو بچا سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو پہلی میٹنگ میں کہہ دیتے کہ جناب یہ کسی اور، ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو چنا ہی نہیں جا سکتا اس ٹاسک کے لیے. پریزیڈنٹ کے پاس چوائس کیا تھا، کس کس کو وہ رکھ سکتا تھا، وہ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں میرے خیال میں کل بتاؤں گا. Although at the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped on after hearing me there, and were other occasion on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmed Raza Kasuri's assassination. Categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from HSN College, Lahore. There were repeat performance of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some my own subordinates seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been. When I آگے یہ کہتا ہے جی میں کسٹڈی میں لیا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، میں نے بیان دیا، وہ ریلیونٹ نہیں. اب صاحب اس میں میں کل پھر ڈیٹیل سبمیشن کر دیتا ہوں سارے ایشو پہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. کیونکہ اب اس کو بہت ہی یہ امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے، اب اس کا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں اس بیان پہ سزا ہوئی ہے تو اور کس بیان پہ؟ اور تو ایویڈنس سر، دوسری ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ تو ساری کروبریٹو ہے یا سپورٹنگ ہے. کروبریٹو نہیں ہے، سپورٹنگ ایویڈنس ہے، کروبریٹو نہیں ہے. اور تو اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں، کوئی مان ہی لے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ امائکس ہیں نا. 4 لوگ تو مان چکے ہیں. آپ امائکس ہیں نا، اس لیے آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں. یہ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، کوئی بھی سینسیبل بندہ، کوئی بھی لا نوئنگ بندہ، کوئی بھی ریزنیبل بندہ یہ نہیں مانے گا. سپریم کورٹ نے مان لیا. نہیں میاں عباس، میں سپریم کورٹ ہوں، پچھلے سپریم کورٹ کی بات. میاں عباس کا جو 164 کا بیان ہے اس میں اس نے بھٹو کے بارے میں کچھ نہیں کہا. نہیں، اس نے تو کہا کہ مجھے اس کے ذریعے ڈائریکشن، وہ تو اس کو تو مانا ہی نہیں گیا نا جی، اس کو تو نکال دینا. فرض کریں اگر مان لے اس کو، فرض کریں مانا ہی نہیں گیا، فرض کرنے فار دا ٹائم بینگ مان بھی لے. نہیں اس نے نہیں یہ باتیں کی. اس کا کوئی اس کا بیان، کیونکہ جب کورٹ میں وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا، وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا. وہ اکیوز ہے نا، اکیوز ہو گیا نا. 164 کا بیان کیوں کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا. اس 164 اس نے کہا کہ مجھے ٹوانے نے کہا تھا، ٹوانے نے کہا تھا. کیا اس کا سٹیٹمنٹ، کیا میجسٹریٹ جس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی اس کو پروڈیوس کیا تھا؟ ہاں کیا. تو پھر تو اس کی کنفیشن ویدر وہ ریکارڈ پہ تو آیا نا، اس کی اپنی حد تک جائے گا نا کہ اس کے بیان کو ہائی کورٹ نے ریلائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ ریزائل کر گیا اس سے، پھر وٹنس باکس میں بھی نہیں آیا نا. پھر کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا جب وٹنس باکس میں نہیں آیا تو 164 کی نہیں ہو سکتا. دیکھیں کدھر ہے اسٹیٹمنٹ اس کا؟ کون سا؟ دوسرے اس کا 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے نا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ادروائز اگر وہ 342 پڑھا جائے گا نا. اگر وہ ملک صاحب اگر وہ 164 کو آپ فار دا ٹائم بینگ ایکسپٹ کر لیں، اس کو اس میں کیا کہا بات کی؟ سر اس نے 164 کو اگر ایکسپٹ کریں گے تو اس نے ٹوانے کا ذکر کیا کہ مجھے ٹوانے نے کہا. ٹوانا تو آیا نہیں، ٹوانا تو فوت ہو گیا نا. اس کا ذکر کیا اس شخص کا، یہ محمود؟ ہاں کیا اس نے، تو کیا 64 میں کیا. ادھر وہ اس نے دیکھیں، یہ بیسکلی جو چیز آئی وہ وہاں آئی اور یہ سپورٹیو ہے. نہیں سر، نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ایویڈنس آپ تب مانیں گے کہ اف ہی از اے وٹنس. ملک صاحب اس طرح کر لیں، کل کر لیں. میں سر جواب دے لوں سر. نہیں تھک گئے. نہیں میں ذرا کلیئر کر لوں، وہ سپورٹنگ نہیں ہے، وہ تو مانی نہیں کسی نے. ایک شخص ایک اکیوز کنفیشن کر لے، بعد میں ریزائل کر لے، وہ نہیں مانا. آپ اس کے کنفیشن کو کنسیڈر نہیں
सर अगर तो वो मुल्जम को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है, उसको दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा, मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुल्जम का है वो उसके लिए है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं है। या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते, मियाँ अब्बास को भी अप्रूवर बना लेते ना, फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते। दूसरे के लिए वो सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है ना सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर उसको सजा दे उस पे उसके ऊपर। आप सिर्फ इतना बता दें, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर रिलाई नहीं किया, उसको डिसबिलीव किया है? नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते पढ़ लीजिएगा, वो पैरा निकाल लीजिएगा, वो निकाल देंगे ना, वो जो जिन्होंने कन्फेशन किए हैं उस पे स्टेट ने अपील नहीं की। नहीं, कोई अपील नहीं की, उसकी क्या अपील करनी, स्टेट का तो काम हो गया, स्टेट का तो काम हो गया ना जी। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो पोजीशन जो है ना उसका कन्फेशन उसके लिए है, उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली। आई एम एड्रेसिंग जस्टिस या साहब, उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली, दूसरी एविडेंस पे मिली है। बस ये देखना कि क्या उसके बयान को 164 के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, 164 का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, मैं कल दिखा दूंगा आपको। ठीक है सर, अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये 164 सही है, ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं, मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की ओर रिलाई करते हैं, ये नहीं है, उसको भी सजा उस पर नहीं हुई। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था, मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम आपको मानते ही नहीं, उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के। वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको। इसमें लिखिए लर्नेड माइकस जस्टिस मंजूर मलिक commenced his submissions assisted by लिखे या ना लिखे? सर बिल्कुल, ये इन तीन बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी। एक तो नाम बताइए, कोर्ट का नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे, नाम लिखा, ये अंसर नवाज मिर्जा, नहीं हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है, assist by so and so. It is now 4 p.m. Full stop. During his submissions, it was noted that there was also a complaint case before the High Court, but the learned amicus stated that filed by the complainant, namely Mr. Kasuri, but the learned amicus stated that he has not been able to locate a copy of the said complaint. Full stop. Mr. Kasuri, the complainant is in court, and in case he wants, and if he has a copy of the said complaint, he should file the same. ठीक है, इनके पास होगी ना? पता नहीं, आप अगर आपका है आप फाइल कर दीजिएगा। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपका है फाइल कर दीजिएगा, आपको भी सुनेंगे जी। Since the very prominent judges of this country who have died, they are on trial. I think notices should be given because somebody should protect their image and their reputation, because a lot is being said about them. They have died, but their successors should be given notice by this court. But let us correct that they are certainly not on trial. We are dealing as per our duty under the Constitution, attending to a presidential reference. These proceedings are broadcast live. These proceedings are well reported in the media. If anyone wants to come forward, they can do so. No, please ठहर जाइए. Now you said something. Now have the They may not grace, come on their own, so let but them if you formally invite them before this honorable court, and I think they are very prominent judges. You see, when all of us must be in our 20s. At that time, they were the judges of this superior court. Dealing with law. And they are being discussed very negatively. So therefore,
law, I personally feel that notices should be given to the the relatives, their families. सूरी साहब अगर आप समझते हैं कि कोई अगेंस्ट द रिकॉर्ड और नेगेटिवली कुछ कहा जा रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आप उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए. It's not my